Good evening, friends. I am CA Satish Goyal from Shastri CP Study Circle. I welcome CA Lokesh Gupta ji and all other members who are present and who are going to join shortly. Let me introduce Lokesh ji to the house. Besides being chartered accountant, he has done LLB from the university in the year 2001. Lokesh, he has done DISA from ICI and FAFD in 2018, Forensic Audit and Fraud Detection. He is a partner of Mr. Shyam S. Gupta and Company, Vivek Vyar. Experience-wise, he's conducted bank branch statutory audit of bank for the last more than 20 years. He's conducting concurrent audit, SOC audit, internal audit of banks, both in private and public sector, with experience of more than 16 years. He's also conducted audit of specialized unit in banks such as currency chest, conducted audit of outsourced area in banks such as agencies involving in refilling ATMs, including audits of ATMs itself. As a guest speaker, he remained speaker on statutory audit and concurrent audit of bank branches at a large number of seminars organized by branches and study circles. He is a speaker on FEMA, FCRA, international tax, and other areas relating to Forex in various seminars. He has also provided training to bank staff on operational areas, including Forex, on a number of occasions. His contribution to professional development is a member of group on certification course on concurrent audit of bank under IASB. He has contributed as member of group for revision of manual of statutory audit of banks for the year 2021 under AASB. Presently, he is a faculty for certification courses on concurrent audit of banks conducted by our institute. He has contributed as a member of group formed to prepare a minimum audit checklist for concurrent audit of banks and revision of Ghosh and Jilani committee under PDC. He is conducting statutory and internal audit of large number of units in both public and private sector. He is also providing consultancy, especially for FEMA and international tax to large number of clients, including listed companies and foreign companies. And friend, today I've requested him to deliberate on bank branch audits, including there was something special on latest certification. He said that he'll be deliberating on various latest certifications are there introduced for us to certify. And yesterday, Bank of India issue was highlighted by many members, and Lokesh just informed that institute has taken up to a large extent on a great and on the move of institute, Bank of India has withdrawn that letter. It's a great success for all of us. And now over to Lokesh ji for his deliberation. Thank you, Satish. Thank you so much for inviting me here to share my views on this topic of bank branch audit with your members. Of course, this is an area where anybody who is part of this exercise feels happy about it. Of course, I feel over the years, the significance is somehow lost from a time where it was very significant. Maybe many firms used to think that is a significant portion of their work. I think it has actually lost that significance. And of course, somehow the banks also have made sure that the opportunity pie was decreasing every year. This year also the opportunity pie decreased by 10%. And next year there has been a discretion which has been granted to the banks by the Reserve Bank of India as to the decision as to how much advances they want to be covered by the secretary branch audit. So this is something which is the world we are living in. My request at the onset would be to every member here is that, sir, what we are seeing basically is, of course, somewhere the issue was basically somehow the automation has actually taken away the lot of work which was associated with the bank finalization process, the branches finalization process.
And we would also agree somehow that the compliance level at the branches have improved. Of course, my experience says that the improvement is not at the level where the statutory branch audit may not be required. But this is somehow an impression which has been passed on to the regulator also by the banks, that the automation and the computerization and the level of the correctness in the system is at a level where the branch statutory auditor may not no longer be required with the branches. So my request would be with all of you would be basically that we all are doing good work, sir. I've seen people working on every single day, including on Sundays, including on holidays, working till late. Sometimes I've received calls from people who are sitting in the branches even at 10 in the night. So I've seen that also. People work very hard. The only issue where I feel we are a bit lacking is basically not reporting those issues. So what happens is that we find out issues and then we leave the issues under the pressure of the management somehow, or we report it in LFAR, but we don't make MOCs, we don't bring it out in our statutory audit. Now what happens is that when these things happen, actually the regulator does not know how much hard work you have put in the branches, how many hours you have put. They see it from the end result, and the end result is if it is a nil MOC and there are no comments in the statutory audit report, then they start to feel that, of course, the what the bank is saying seems to be right, that there are no changes which are required. So financial risk at the branches is no longer important at the level where the audit is required. So sometimes it becomes a problem, sir. So very important, sir. And my request to one of all of you would be basically that when you go for a statutory branch audit this time, please ensure that we do the best of the work we do. We always do that, and also that we don't get into pressure and allow the bank's management to somehow pressurize us into not completely completing our duty as to the reporting part, whether it is MOC or putting it in the main statutory audit report. Please ensure to do your work completely. Somebody asked me in question and answer what was the issue with Bank of India. So, uh, not a very important point to discuss. However, just because you have asked, I can tell you there was a mail which came from Bank of India to all the auditors while allocating the branches. The letter said that you have to complete the audit by 6th and maximum by 8th. Otherwise, the fee may not be paid. If you do it thereafter, the fee may not be paid. So that was taken up. Even I requested a few CC members that this seems to be a very harsh condition, which and a very unjust one for that matter. So in any ways, I am sure a lot of people actually wrote to our institute for the same, and the institute responded by taking up the matters. Even the matter was escalated to the Reserve Bank of India, and somehow by the end of the day, the Bank of India decided to withdraw that guidelines, and now they have said that please try and do the work within the time given. And in case additional time is required for whatever reasons, the additional time would also be allowed to do. So I think that's a good thing which has happened, that our institute was proactive, and somehow with the effort of everybody here, the issue was resolved to the satisfaction of all. So not a big issue, but of course a very important issue as far as the audit independence goes, or the audit quality goes. Anyways, now coming back to the topic, sir. Now bank statutory audit, not much has changed from last year. The IRAC circular 1st April 2022 has remained the same. There are no changes as far as the IRAC guidelines goes. So please, anybody who's looking at seeing an updated guideline can download the 1st April 2022 IRAC circular, and it contains all updated guidelines. A lot of guidelines came last year, so all of them have been updated, and a new circular was issued on 1st April. That continues to be the guiding source as far as IRAC norms is concerned.
Of course, there are some changes in the interest subvention side, the certification which we give on the interest subvention, that we'll definitely discuss. And there are few things otherwise also which may be important, especially in schemes like ECLGS. So that is something which is not included as part of the RBI guidelines, but would try and give to you the important changes what happened during the last year. Because I think ECLGS would be a very important area to basically look out for this year, considering the fact that the ECLGS loan was basically given in 2020 and 2021. That was the bulk of where the loans were given. And this time, a lot of these loans you might find slipping into NPA categories. So there are some guidelines which are very important when it comes to these NPAs, especially for ECLGS. So I'll try and bring out those circulars also for you that you will not find on the RBI website. So they come by way of a letter to the banks and is available on the ECLGS site actually. There is a separate site for it. So that is something I think would really help you in doing your work to the best of the level we expect from a professional. Okay. Now, the audit, most likely people would start in a day or so. Most of the banks have already issued letters. Even I received the letter today morning from one of the banks for which we are going to perform audit. Okay, so most of the banks have already issued letter, and we can expect people to start off with the audit maybe from Monday or Tuesday. So this is something which is now upon us. So very apt time, Satish ji, to just है ना क्या होता है ना पेपर से पहले जस्ट टू रिवाइज होता है ना लास्ट में एक रिवीजन जरूरी होता है सो मे बी अ गुड रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है तो व्हाट आर दी अब जैसे मैं इस तरह से इसको स्टार्ट करता हूँ मैं इसको इस तरीके से स्टार्ट करूँ सर जैसे अपॉइंटमेंट लेटर आया मेरे पास आज मॉर्निंग जब मेरी नींद खुली और हमारी आदत बन चुकी है कि मोबाइल फोन खोल के देखते हैं कि भाई व्हाट्सएप खुला या ईमेल खुला तो ऐसे ही मैंने ईमेल खोला तो आई सॉ मेल फ्रॉम द बैंक फॉर व्हिच आई एम डूइंग ऑडिट एंड व्हेन आई सॉ दैट मेल द फर्स्ट थिंग व्हिच शुड कम टू माय माइंड मुझे क्या फर्स्ट स्टेप क्या करना है anybody Satish I don't know matlab whether they can allow log to open they can if they want to come with their this audio and video I can allow otherwise they can put in chat box right so what should be the first step we should anybody matlab let's make it interactive I think that would be the best thing we can do so members may answer in chat box and queries can be asked in Q&A. Right. So whatever Lokesh is asking, you can answer in chat box so that we would be looking at queries in Q&A and chat box for the answers to the Lokesh question. So किसी ने मेरे को कहा सर इन वन ऑफ दी सेमिनार्स तो मैंने ऐसे पूछा उनसे तो किसी ने कहा सर सबसे पहले तो ब्रांच मैनेजर को फोन करके पूछना कितने एडवांसेस हैं ब्रांच के अंदर तो मैं कहा दैट कैन बी आल्सो अ गुड आंसर एक्चुअली बट इन एनी केस अगर मैंने कहा कि अगर एडवांसेस कम भी हुए तो ऐसा तो नहीं कि आप ब्रांच वापसी कर दोगे कहोगे कि मैं नहीं करने वाला ये ब्रांच का ऑडिट तो आई एम श्योर वो कम हो या ज्यादा हो तो इट इज ओनली अ मेंटल सेटिस्फैक्शन बट वी हैव टू परफॉर्म द ऑडिट इन एनी केस राइट सो the first thing which I can think of is to communicate with the previous auditor. So today morning, the first thing which I did when I came to my office was to write an email to the previous auditors. The good thing is that it was given in the letter itself. So I did not use, I was not required to actually go and find out the details. So I wrote a letter to them, email to them saying that I've been so appointed and please give your no objection to the same. And then I proceeded with giving them a call also. So I called them up, spoke to the two audit firms, understood from them what are the issues in the branch they last audited. I think that's a very important point to do, sir, because he has done the audit last time. Not much would have changed from last time to this year. So you can actually understand what kind of branch it is and what kind of activities the branch does and the issues which he would have pointed out or which he would have faced during the course of the audit last year. Because in any case, the first thing for any auditor is to understand the auditor. So you have to understand your branch.
Why? One is because you have to train your staff before they visit the beach. The most important thing. Because unless until they are saying the chat is disabled, sir. Yeah, Satish, I'm एक बार looking आप at, देखिए. sir. I'm looking at this, and but for the first time, I'm seeing that chat is disabled. I'm to search how to enable the I'm chat. doing it, sir. Don't worry. Okay, sir. And uh, so I've done it. I hope it is done now. और मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि कैसे करना है, सर. Right. So in the chat box, actually, there are three dots on the lower hand side. Okay. So you can actually, if you click on it, you will see the options actually. Okay, got it, got it. So Right, sir. it's on now. Great. So the first thing is to understand the auditing. So what we have done is first we wrote an email, called them. They sent us the email also saying they have no objection. Of course, then we gave the acceptance to the bank saying that we have accepted the assignment. And then the next thing what we did was we called up the branch manager. So that happened after lunch. By this time we have done the acceptance and everything. We called up the branch managers. We told them that we have been appointed. They were already aware in any case. We told them we require few details from you on an immediate basis. And what were the details which we asked, sir? And I think everybody should ask for is we asked them to provide all the audit reports they have in the last year, all the audits. So it can be an internal audit, it can be concurrent audit, it can be system audit, it can be any other audit for that matter. It can be a revenue audit, it can be an audit done by RBI, right? Because one, I have to report upon it in the LFAR also. So in any case, I have to study them, understand them. And then why to waste time sitting in the branch trying to read through a say 80-page report or a 100-page report? Why can't I do it today sitting in my office? And why it would help me is we would understand the branch, the activities at the branch, what are the shortcomings which other bank auditors have reported, note it down, make short points. Before we visit the branch, we would be aware about the branch. Secondly, what we do, sir, we call for the GL and PL from the system. Now, in any case, today is the 1st April, so you can take a GL of PL of 31st March also. But even if you would have taken about 25th March or 27th March or 28th March, it would not make much of a difference because not much would change between the last 2 to 3 days in any case, right? So we take the GL and PL, try to mark out any items which we feel needs to be looked at. Because don't forget, sir, bank audit is not only about IRAC. We are certifying a balance sheet as in case of any other corporate audit. So we need to actually go through the GL and PL, mark off any items, do analysis with the previous. So that we do in the branch. When you go to the branch, we pick up the last year audit report. We compare the this year GL, the balance sheet and PNL with the current year GLPL, and basically try and understand of any variations, any unusual deviation which needs to be monitored or which needs to be looked at. So this we do. Third, we call for the breakup of all advances. The purpose is to understand कि भाई मेरी branch में how many advances are there, what is the breakup in terms of CCOD, TL, DL, what are the TL and DLs basically, what kind of advances are there. Because when we again look at LFAR, it asks you to provide you the samples. So this is something which is unique in case of bank audit. This is the only regulator, RBI is the only regulator where the regulator is asking you to disclose the samples. So everywhere we do audit on sampling basis only, but nowhere the regulator has asked you to state on the face of the report itself what samples we took in preparing the report. So this is something which is very unique in case of bank audit. So why to waste time sitting in the branch then deciding as to what samples I'm going to take? Why can't I sit while sitting in the branch in my office, uh, decide on the sample which I'm going to take. Of course, I can update the sample while I'm there at the branch. In case I feel more samples needs to be taken for some particular area, we can do that. Or in case we feel that any area where I want to reduce the sample, that also I can do. But at least we would have decided on the bulk of the sample which we are going to take. So this, if we are prepared with this, I think we have prepared well for an audit at the branch. And of course, it will help us in doing a more effective audit. It would also help us in doing a more timely audit, sir. Though time
you should take as much as it is required for you to conduct the audit. But I think this would really help in basically doing a timely audit also. It will save the time also. So we'll be talking about IRAC norms, the provisioning norms. We'll talk about restructuring of advances also for a bit. Then we'll talk about what is project under implementation and how to deal with it. Then some COVID-related relief we'll talk about and other sections. Okay, this we have actually spoken about. Now, very important is there is a circular of Reserve Bank of India dated September 14, 2020. It talks about automation of IRAC processes in bank. Okay. Now, this is a very, very important circular, and one of the bases how to select sample size. So, sir, sample size will be basically dependent upon how you basically the type of branch it is. So, in any case, the LFAR gives some certain guidance in terms of saying that you have to pick up all those cases which are 10 crores and above, exposure of 10 crores and above, fund based plus non-fund based, plus or 10% of the total advances of the branch, whichever is lower. So that you have to in any case take. Plus, you have to take an appropriate sample to cover all the audit points which are there in case of basically LFR. So that would be the basic sample which you should take, and others would basically depend upon the kind of audit you have. So maybe an agricultural branch would have a different kind of a sample size and a sample requirement. Then a industrial finance branch would have a different kind. So it would depend from case to case. Okay. Right. Now, this automation circular came on September 14, 2020. This was to be implemented by June 30, 2021. So 21-22 was the first year where this circular was fully implemented. And every bank gave a go-ahead a compliance report to the RBI saying that we have already implemented the circular. Now, what is important again here, sir? What the system is saying, what this circular is saying that making an account from an NPA to a standard account, from a standard to an NPA account, so downgrade and upgrade of account, calculation of provision, income recognition, derecognition shall be system driven. There should not be any manual intervention. Exceptions can be taken, which are expected to be minimum and temporary. Manual override, wherever done, should have a minimum 2-level authorization and preferably from a centralized location. So you don't want to give that power to the branches. And such manual overrides shall have audit trails and subjected to audit by concurrent statutory auditors. I think this is the defining point here, that wherever they do a manual override, suppose a system is saying this account needs to slip into NPA, and there was a manual intervention done to basically somehow save the account from becoming an NPA. So as an auditor, this system would generate an audit trail of all such manual intervention done. And this audit trail is under audit by the secretary as well as the concurrent audit. So I think a very important point here is that we should call for this report, this manual override report, and ask the branch to provide us the report so that we can check the reason why the account was overridden. The basically say the system was declaring an account as an NPA, and it was manually overridden, and the account was continued in standard category. So we can actually understand the logic, decide whether the logic was correct, and the basis for which the exception was drawn was correct or not. So I think this is a very, very This report important. will be exceptional report or it would be a some other different name? report, sir. It would be a different report. It is not part of the exception report of the branch. So it is a separate report. Maybe the report is it may not be available at the branch level also sometimes. So they can call it from their ZO or wherever that manual overridden was being done. So they can actually call for that report. But I think a very important report. As a concurrent auditor, you also said that as a subject to audit by concurrent auditor. If it is not available to the branches, concurrent auditor will not be able to attend it and will not have a say to call. Right. The problem is, sir, strategy. कि concurrent auditors के साथ क्या होता है ना कि because they are appointed by the management, they are generally under more pressure. They are not really independent in that sense.
So what happens is in those cases, the concurrent auditors are under a pressure not to report on NPAs and all. So that is the reason why we need independent auditors, and the independence needs to be maintained of auditors so that the correct reporting is done. So I think the important point here is, sir, is that the report needs to be provided. In case it is not so provided, in spite of your repeated request, and the request needs to go as a written request, as an email or a letter which the branch has received. It should not only be an oral request. Because oral request क्या होता है कि वो सोच के चलते हैं कि भाई इसको तो follow करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये रिटर्न में नहीं है. So when you give it in return, maybe an email, then they feel pressurized to comply with that. Okay. So in case it is not so given, I think this is a point which you would have to consider whether this requires some reporting in your main audit report, because this is a limitation which has been then cast upon you, that the relevant information is not being provided. Because the system itself, because we are relying upon the system to do the automation work, to do the classification work, and somehow if this report, which even the RBI says needs to be audited by the auditor, itself is not being provided to the auditor, then it is something which is a limitation on the work of the auditor. Right now, what can be other areas which we may look at other than IRAC basically? Is one way is basically, say suppose you have a large advance at your branch. Say the advance is of 6 crore rupees. Now, the important point would be that if it is of 6 crore rupees, whether you would be interested, whether you will be keen to know, suppose it is under multiple banking, it is dealing with multiple banks, whether you will be keen to know what is the status of this account with other banks as on 31st March. Whether it is declared as an NPA somewhere or declared as even an SMA special mention account, or anybody who has done the LFAR last time, there is a concept of red flag accounts and there is a concept of early warning signals. Now, what is a red flag account is basically, and what is early warning signals is, earlier it came as a separate guideline. Now it is part of the master circular of fraud itself. So if you want to study more about it, you can actually go ahead and look at the master circular of fraud. Now, what is the guideline saying is that in certain accounts where there is any early warning signals, so there is a list of early warning signals which RBI has prescribed, and they have said that the banks can do an addition or deletion to the list also, so that they can have their own list of early warning signals. Now, if there is any early warning signals in any account, if it is so noticed, you have to do a reporting to the fraud monitoring group of the bank. Once you do a reporting to the fraud monitoring group, they would check whether there are early warning signals in the account. In case they feel there are early warning signals, they would report the account as a red flag account. And what is a red flag account is basically it means that there are some problems in the account. We are not able to as on decide whether it amounts to a fraud or whether it amounts to somehow becoming an NP or whatever. We are under investigation on this. So why red flag is being done is basically so that anybody who's dealing with that customer, any other bank dealing with that customer, would be able to know that there is some problem in the account which other bank has identified. So for that purpose, there is a reporting which happens on CRILIC. What is CRILIC? Basically, credit repository information on large credits. So basically, for all cases of 5 crores and above exposure, our reporting in CRILIC is done. It is an interbank platform designed by RBI. So you can see the reporting done by other banks also. And there is a weekly reporting, there is a monthly reporting on CRILIC. So I think wherever you are doing an audit, the exposure is of 5 crores and above, please ask the bank to provide you the CRILIC report for that account. Keep it in your audit file. Check for anything which is got interest for you, anything which impacts your audit, and then take a follow-up. So I think this report we should all take for all cases of 5 crores and above exposure. So how bulky this report is? Not really bulky, sir. And the good thing is, again, it is downloaded on a soft copy. So the banks can also provide you a soft copy. Don't need to take a hard copy of it.
So why I'm asking this question is, supposing there are 10, 15 accounts, 5 crores and above. So we need all those acrylic report. And if it is a few pages, then we can always, I mean, it's easy to go through those acrylic report. But if it is 100 pages, 200 pages, then No. which It is particular not like segment? that, sir. It would be, say, running into 2 to 3 pages at the most Okay, for any then report. that can be read once. Easily. एक report तो अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद idea लग जाएगा कहाँ पे जाना है. बिल्कुल. Right. Okay. Next point would be important would be that how to check for NPS. So one of the What is ways CFR, sir? CFR also you are mentioning here. CFR is Central Fraud Registry, sir. Okay. So there is all the cases where a fraud has been reported by to the Reserve Bank of India, it becomes part of the CFR. Okay. So this is important. Then important point again is how to check for NPS, sir. So what we have been doing is there is a SMA report which gets generated. Now it is actually generated on a daily basis because now NPA marking in banks is a daily affair. It is not now maybe a monthly or a quarterly or a yearly affair. Earlier, generally used to see that the banks mark NPAs either at the month end or at a quarter end generally, or a lot of bulk of NPAs used to get marked at the year end on 31st March. Right? So this is now a daily affair as per the Reserve Bank of India. Every day there can be an NPA declaration. Every day there can be an upgradation of account. Every day an account can become an SM. So this is something which is a challenge even for the banks actually, if you ask me. The banks also find it very difficult to do it on a daily basis, but it is something which is envisaged by the Reserve Bank of India. So this SMA report we take off 31st March. Now these are those accounts which are running irregular. The account is not 100% as per the agreement between the bank and the borrower, right? But the irregularity is not enough to classify that account as an NPA. So what we need to do basically is to pick up the 31st March report, check this report thoroughly. As per the bank, these accounts may not be classified as an NPA, but when we check it from the auditor's point of view, some of those accounts might seems to be an NPA. So you can look at this report. Now, what we have been also doing is that we have been taking this report as on 28th Feb, 31st January, 31st December also. And we have been comparing that with the 31st March. So we do it on Excel, we do a VLOOKUP, and then we compare. The purpose is basically to understand any accounts which were available, which was appearing in the, say, the December report, January report, February report, but which is not appearing in the March. The reason for such process is that what we have seen in banks is that generally in the last quarter, lot of branch managers, what they are doing is they are following up with the customers, trying to save the account from slipping into NPA. Right now, I have no problems with banks following up, the branch manager following up with the borrowers to recover the dues. It is part of his duty to do it. And if there is an actual recovery and the account is saved from becoming an NPA, I have no problems with that also. My problem is that a lot of times what we have seen is some malpractices, some creative accounting practices which the bank might follow to save the account from becoming an NPA. So what we have seen is that the loan was given in the account of somebody, say the account is of proprietorship firm. So the loan was given in the wife's name and the money was transferred to the proprietorship's account of the husband, and somehow it was saved from becoming an NPA. We have seen cases where check purchase entry was done on 30th March, 31st March to save the account from becoming an NPA. And one of the cases we saw that the check purchase entry was done, but the check was never sent for clearing even. The biggest issue is the check was not even sent for clearing, but the entry was made in the books of account. So these kind of issues we have seen. So this activity of comparing and finding accounts which were earlier appearing in the list of probable NPAs or SMAs and which is not appearing in the list of 31st March helps us to get, say, 10, 15 accounts where there is a likelihood, there is a chance, then the bank may have tried to do something funny. Okay, so through this identification, we are able to devote much more time, efforts on these accounts and see if any such malpractice may have been tried by the branch. Okay, and we have been able to find results also, sir, frankly.
Through this activity, we have been able to find such cases in a lot of incidents, lot of cases. Also, sir, if the account is almost every quarter and or every month end is coming under an SMA or 1, 2, 3, whatever. So naturally need to be taken care of. Of course, that is very important. So if it is continuously running into say an SMA category, then of course it shows a weakness in the account, and there would be a likelihood that the bank might try to save the account from becoming an NPS. Rachit ji has a question for you, Satish ji. You might answer. It is in the chat box. Not required. We may not be able to give CPRs because institute has not yet approved it under the council decision, which the council took only on 24th of March, stating that no virtual webinars will be allowed for structured CPRs after with effect from today, 1st April 23, and members need to upload their details on the CP portal, stating that they have attended this seminar, which the activity is being done annually by the members for unstructured CPRs. So no study circle will have virtual webinars from today onwards. We are organizing it because we had requested Lokesh is such a busy personality as far as bank audit is concerned. So he did not have time until 31st March, so we requested him to do it on first. And unfortunately, council decided not to allow CPRs from 1st April on any webinar. So from today, all seminars will be conducted by the study circle, physical seminars, not the webinars. So I'm requesting talk to president and vice president, sorry, chairman and vice chairman, CP secretary, the CIRC CC candidates who have not yet given full assurance, but I'm fighting. If we can get CPRs here, we'll get it. Otherwise, we may not be getting it. So अगर हमें मिल ही नहीं रहा CPRs, तो membership number तो वैसे भी नहीं चाहिए. यहाँ तो study करने के लिए बैठे हम फिलहाल. Yeah. So important point is, sir, that CPRs should not be the target actually. Yes. CPRs be the product of that knowledge sharing which we are doing actually. Is the byproduct, not the main product. So let us work in with that principle in mind. Okay. Now, again, very important, sir, inter-office record. There is a report which gets generated every day practically. Please take this report as on 31st March, inter-office recon report. There will be some entries which may be outstanding as on 31st March. You might have to see whether it impacts your audit and whether MOC is required for such entries which are outstanding. Okay. Then suspense and sundries. Now, suspense and sundries again is a very critical area as far as audit goes. Now, suspense and sundries basically are the office accounts. Suspense would be generally on the asset side. Sundries would be basically on the liability side. They are very important as far as audit goes, sir. Why it is so important, sir, is because ultimately, please understand that these accounts are office accounts. These do not belong to any customer. Any entries you make in that office account, no customer is going to come and complain. So there is a likelihood that these accounts can be misused for the purpose of saving the account from becoming an NPA sometimes. Sometimes the accounts can be misused for the purpose of say hiding some entries which are very important from the point of view of an auditor. We have seen cases where, say, to generate credit into an account, an entry was parked into suspense and the credit was given to the account. We have seen cases where, other than advances, if I talk about, we have seen cases like Anjali को OTP चाहिए तो select. So we have seen cases where say we saw an advance given to a supplier in one of the cases. When we asked the branch what is the nature of the advance, whom the advance has been given, they told us the advance has been given for purchase of air conditioners. So we asked them where are the air conditioners. They told us that you are sitting in that air conditioners
air only. The air conditioners have already been installed at the branches. So now this becomes very critical. Please understand. So if the air conditioners have already been installed, it cannot be a suspense item. It has to be capitalized. And if you capitalize, then there would be an issue of depreciation. So this is important. We have seen cases. पापा के पास ही रखा हो। We have seen cases where customer have say a customer account was defrauded. He went into banking ombudsman with the issue. He was compensated as per the instruction of the banking ombudsman. Suspense account was debited and the customer was compensated. Now we ask them why the entry should be remain outstanding in suspense account. Either you show us that it has to be recovered from somebody, and what is the likelihood of that recovery. If it is not so, then it needs to be written off in or a provision needs to be made for the non-recovery of such cases. So there can be similar many other issues. So please look at the nature of entries which are outstanding as on 31st March. Okay. Then one activity which I tell everybody. लोकेश, इसमें एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ. Uh-huh. Generally they keep it nil by adjusting one entry after a period, after a fixed period, or say 30 days or 60 days, and creating another entry for that. But अगर हम सिर्फ 31st मार्च की भी एंट्री देख लें, उससे हमें पता चल जाएगा फेयरली. उससे सिर्फ एज वाइज हमें जाने के लिए थोड़ा सा जरूर जर्नरी कर लेनी चाहिए कि 2-3 महीने में वो क्या बार बार उसको एंट्री को रिक्रिएट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं पुरानी, तो एज वाइज उसको पुराना नहीं होने दे रहे सस्पेंस एंट्री को या सेंट्री को. अदरवाइज जो एरियाज आपने बताए वो तो अगर 31 मार्च की एंट्री अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसी से भी क्लियर हो जाएगा. बिल्कुल. तो नेचर ऑफ एंट्रीज इफ यू लुक एट, most of the cases you will be able to understand if there is a rotation of entries which they might be doing. And the most important is if they are changing the aging, that aging may not be that much important as far as I go from the audit point of view. What is more important is my impact on the financial statements. Yeah. So if the impact on the financial statement is there, then I would have to appropriately deal with it. So suppose I can tell you one case where the aging might be important. So look at एक तो लफार में रिपोर्ट करना है, that is one area. लफार में रिपोर्ट करना है. दूसरा सर क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई एंट्रीज हैं जो ओल्ड आउटस्टैंडिंग खड़ी हुई है आपके पास, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए सनरीज के अंदर. अब इसके अंदर ना पहले क्या होता था, अगर मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊं, तो देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन बैंक्स यूज्ड टू राइट ऑफ दोस एंट्रीज बाय क्रेडिटिंग देयर इनकम अकाउंट. They used to say कि भैया अभी रिकवर नहीं हुए, 10 साल हो गए, हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं और इनकम बना लेते हैं. Now later on RBI came with a concept of DEF. तो ये बेसिकली एक अकाउंट उन्होंने खोला, उसमें उन्होंने कहा ये अकाउंट्स पे भी एप्लीकेबल होता है. अगर सेविंग अकाउंट 10 साल से ऑपरेटिव नहीं है तो वो उसको डेफ में ट्रांसफर कर देते हैं. Then later on if a customer comes and asks for that balance, तो बैंक को डेफ से मंगवाना पड़ता है. There is a process of calling it back from DEF, along with interest they are recovered. Now, these sundry entries cannot be taken to income account. So as per that circular also, अगर ऐसी कोई entries outstanding है, वो भी DEF में जानी चाहिए. तो you can actually check. कई बार क्या होता है कि banks इस तरह के भी issues हमने देखे हैं कि वो अभी भी मतलब out of ignorance और out of sometimes pure lethargy कि वो अभी भी कई बार income में book कर लेते हैं इस तरह से. So that time the aging might be important. But otherwise generally क्या है कि nature of entries से ही आपको काफी कुछ idea मिल जाए. As to the aging also, and as to the whether the continuity is required or any provision is required or anything else you need to do about the entry that you can check. ठीक है सर. दूसरा इसमें एक आता है सर, एक important activity है जो मैं सबको कहता हूँ कि आपको जरूर करनी चाहिए, is to compare the advances of the previous year with the current year figures. आपके पास एक advances NPA की list होगी as on 31st March 2022. उसको कंपेयर कर लीजिए विद द लिस्ट ऑफ 31st मार्च 2023. क्या रीजन है उसको कंपैरिजन करने का कि आपको 3 ब्लॉक्स में डाटा डालना है. वन इज द ब्लॉक व्हिच सेज द अकाउंट इज एन एनपीए लास्ट ईयर, इज एन एनपीए इन दिस ईयर. एक आएगा जो एनपीए लास्ट ईयर नहीं थे और इस बार एनपीए यानी फ्रेश एनपीए, और एक आएगा जो पिछले साल एनपीए था और इस बार एनपीए नहीं है. ठीक है. द अकाउंट में हैव बीन अपग्रेडेड और द अकाउंट में हैव बीन क्लोज.
ठीक है, ये तीनों ही टेबल्स को हमारे को चेक करना है। क्या क्या चेक करना है प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा कि पहले अकाउंट जिसमें अकाउंट पिछले साल भी एनपीए था और इस बार भी एनपीए, उसमें पहली चीज तो चेक करिए डेट ऑफ एनपीए क्या है सर। What we have seen is that in a lot of cases, what happens is date of NPA changes. Last year NPA था account, date of NPA was 30th September 2021. This year also the account is in NPA, the date has changed to 30th September 2022. अब ये कैसे चेंज हो गया सर? क्या ये चेंज सही है या नहीं है? क्योंकि हो सकता है एक एक्सेप्शनल केस में कि ये अकाउंट गॉट अपग्रेडेड ड्यूरिंग द ईयर एंड देन अगेन गॉट डाउनग्रेडेड, कि भाई उसने पेमेंट दी एक बार, ये अपग्रेड करा और फिर से वो डाउनग्रेड हो गया, तो डेट चेंज हो सकती है इन एन एक्सेप्शनल केस, बट जनरली द डेट वुड रिमेन एज इट इज। तो उसको चेक कर लीजिए। तो अकाउंट जो सब स्टैंडर्ड में था पिछले साल और इस साल डाउटफुल में स्लिप करना चाहिए था, वो अभी भी सब स्टैंडर्ड में चल रहा है। दूसरा, sir, security in NPA accounts very important, especially when the account is slipping into from a substandard to a doubtful category, it becomes very critical because जो आपका unsecured portion है उसका 100% provision होगा। Now this is a trouble with nearly every bank I have audited. They do not modify the security value in the accounts to check for the realizable value of security. कार खरीदी सर, कार लोन दिया 10 साल पहले दिया, उसकी कार की वैल्यू थी 10 लाख, अकाउंट उसके बाद एनपीए बन गया, वो आज भी 10 लाख दिखाए जा रहे हैं उसकी। द वैल्यू शुड बी द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, इट कैन नॉट एक्सीड द रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो आपको देखना है। उससे क्या इम्पैक्ट आता है कि अकाउंट में आपने सिक्योरिटी चेंज करी, इमीडिएटली देयर माइट बी अ चेंज इन दी प्रोविजनिंग, बिकॉज डाउटफुल में अनसिक्योर्ड पोर्शन का 100% प्रोविजन है और सिक्योर्ड पोर्शन का जो है 25, 40, 100 डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड फॉर विच इट हैज रिमेन इन द डाउटफुल कैटेगरी। एंड तीसरी चीज रिकवरी इन एनपीए अकाउंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आरबीआई क्या कहता है इसके लिए? आरबीआई कहता है सर इट इज डिपेंडेंट अपॉन बैंक्स ओन पॉलिसी। तो बोर्ड अपनी पॉलिसी बनाए एंड कॉन्सिस्टेंटली फॉलो करे फॉर ऑल दी। तो पॉलिसी जनरली बैंक्स में आपको क्या मिलेगी कि पहले तो हम एक्सपेंसेस रिकवर करेंगे। स्लाइड इज नॉट मूविंग बिकॉज आई एम नॉट मूविंग दिस स्लाइड सर। आर यू एबल टू सी 10, 11, 12? देन यू आर ऑन द राइट स्लाइड सर, डोंट वरी। So don't worry about the slides sir. Okay, मैं तो इतनी बार रिपीट कर चुका हूँ ये स्लाइड की, मुझे स्लाइड पता है एग्जैक्टली नेक्स्ट वाली कौन सी आने वाली है, so I can actually without even moving the slide I can still continue with, so don't worry about it. Okay, so जो रिकवरी है सर, होता क्या है प्रैक्टिकली, हमने क्या देखा है अकाउंट्स के अंदर कि अकाउंट में इंटरेस्ट की एप्लीकेशन तो बंद हो चुकी होती है बिकॉज द अकाउंट इज एनपीए। सो व्हाट हैपेंस इज लॉट ऑफ टाइम पीपल क्या करते हैं, उसमें पैसा रिकवर हुआ वो सीधा अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बट अनअप्लाइड इंटरेस्ट को रिवर्स नहीं किया। तो रेदर देन एडजस्टिंग द इंटरेस्ट, द प्रिंसिपल इज एडजस्टेड व्हिच इज नॉट इन कंसोनेंस विद द बैंक्स ओन पॉलिसी। ठीक है, तो वो जरूर आप चेक करें। पॉलिसी? बैंक की पॉलिसी फॉर रिकवरी, बैंक्स ओन पॉलिसी। हाँ, वो बैंक्स ओन पॉलिसी इन एनपीए। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो अकाउंट पिछली बार एनपीए नहीं थे इस बार एनपीए यानी फ्रेश एनपीए, उसमें क्या देखना है, अगेन द डेट ऑफ एनपीए बिकम्स क्रिटिकल, कि करेक्ट डेट ली गई कि नहीं ली गई, because we have seen that there is a tendency in the banks to delay the declaration of accounts as NPAs. So please check the correct date has been picked, and as I told you, it is now a daily affair. It may not be the month end, it may not be the quarter end, it may not be the year end. It can be any day during the whole year. Sometimes even we have found out cases where the accounts were declared NPA in this year. When we actually checked, the account should have been declared NPA, say 2 years back or 1 year back. So we can change the date of NPA to 2 years back or 1 year back also. And in that case, account would directly slip into the doubtful category this year. Okay, so this is important. Then secondly is the income. एक चीज और जो मैंने फेस किया है एनपीए के केसेस में, और पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी वाला आपने बताया, पर्टिकुलरली मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। बैंक ऑफ इंडिया में हमने देखा सिक्योरिटी की वैल्यू ना लिखी होने की वजह से या लिखे होने की वजह से वो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड की क्लासिफिकेशन चेंज होती है, या बहुत सारे केसेस में वो जो एक हम एनपीए की क्लासिफिकेशन जनरली ज्यादा ध्यान देते हैं, पर प्रायोरिटी सेक्टर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर की क्लासिफिकेशन भी बहुत हिट होती है। जैसे स्टाफ के एडवांसेस प्रायोरिटी सेक्टर में आ रहे होते हैं कई बार,
या एफडीज के केस या कोई और है, वो सारे के सारे प्रायोरिटी में डाल रखे होते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन भी उनकी एक पूरी जो सेट आती है, कुछ नहीं करना उसमें, क्लासिफिकेशन वाला जो अकाउंट वाला लिस्ट है उसका बस एक नजर मारने की जरूरत है और आप सर्कल लगाएंगे और ये इधर से इधर हो जाएगा। जैसे व्हीकल लोन है, वो उन्होंने प्रायोरिटी में डाल रखे होते हैं। तो ये बहुत सारे चेंजेस कर रहे होते हैं। और दूसरा, एक बैंक ऑफ इंडिया में मैंने देखा कि रिकवरी पर वो जो अनरियलाइज इंटरेस्ट है, उसकी जो रिकवरी या उसमें चेंजेस आने हैं, वो नहीं हिट करते। कई बार कर रहे होते, कई बार नहीं करते। उनका सॉफ्टवेयर में इशू है, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। Right, right. So the good thing in bank audit is, Satish, कि everybody has nearly done it someday or the other, and everybody has experiences to share actually, which is a very Yes. good thing actually. कि and even when we also sometimes learn from मेरा the लास्ट ईयर का experiences ही of है, others. मैंने इसलिए बताया कि लास्ट ईयर वाला ही एक्सपीरियंस Okay, लास्ट ईयर तक था। पिछले 5-6 सालों से लास्ट ईयर तक था। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो हाँ जी। दिस इज वेरी गुड कि हम एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से एक्चुअली शेयर करते हैं और सीखते भी हैं बहुत सारी चीजें। So very valid point. And I think there was a slide much ahead which actually talked about it. So basically, Satish ji ने जो कहा, important point is we always concentrate on NPA issues, but I think जो बैंक के अंदर classification advances को तीन areas में है basically. One is the sector wise classification, which is priority and non-priority, जो सतीश जी ने बात की। दूसरी is the security wise classification, which is secured by tangible assets, secured by guarantee, and unsecured. And third is where we concentrate all our energies on is basically the quality wise classification, which we call as a standard account and a NPA account, basically where we concentrate our efforts basically. So, but the earlier two are equally important and impacts the bank. Uh, and a MOC would be required for wherever you do that changes, and MOC would be required to be given for it. Okay, so very valid points. Thank you, Okay, thank you। so coming back to the same point, and then the income recognition policy in case of freshly identified NPS. So what is the rule? RBI says that suppose account becomes an NPA on 30th September 2022. So from 30th September 2022 itself, there would not be any application of income to the account unless until it is realized. And any application of interest before 30th September 2022 and which is not realized also needs to be de-recognized. Now, what I've seen usually is then the branch manager would tell you, sir, कि सर ये de-recognition जो होना है वो जो इस साल इनकम प्रॉफिट एंड लॉस में गई उसी का तो आप de-recognize करोगे। सो फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर जो इनकम में गया उसमें से आपको कोई लगता है de-recognize होना है तो आप कर दो। भाई पुराना तो इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में गया ही नहीं है, तो उसका आप कैसे de-recognition कर सकते हो? So please do not fall for it, sir. The RBI circular is very clear. It says that the de-recognition can happen for any number of years when if the realization has not happened. You can go up to the date of disbursement of advance. Okay, but they also clarified one thing which came last year. Please note that is that in case as part of the original sanction, there was a moratorium on payment of interest. Okay, so there is say a term loan and there is a moratorium on payment of interest for say 1 year. So this interest for 1 year would get capitalized at the end of the moratorium and the EMI would be decided based upon the capitalized interest. Okay, in that case, the interest which is to be capitalized during the moratorium period, it cannot be de-recognized. ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसके अलावा आप de-recognition कर सकते हैं except प्रीवियस when ईयर। interest has to be recovered during moratorium. हाँ, if the interest is to be recovered during moratorium, there is no moratorium on payment of interest, so this clause would not apply, and that income, if not recovered, would have to be de-recognized. Okay. वॉइस इज क्लियर अनु जी। आप अपना सिस्टम चेक करें। मैं तो जनरली आप देख रहे होंगे मैं अपने आप को भी म्यूट। Okay, great. Now the third point is accounts which were NPA last year are not an NPA in this year.
Okay, please check the reason for the accounts coming out of the NPA status. One reason can be the account got upgraded. The rule for upgradation is that on the date of upgradation, the complete overdue in the account should have been recovered. There should be nil overdues. Okay? And not only in the account which is getting upgraded, in all the account of that borrower. So it cannot be a case that one account, say a customer has a CC account, he has a housing loan, he has a car loan. So he gives all the recovery in the car loan. There is nil overdues in car loan, but they are overdues in say housing loan and CC account. So the car loan account cannot be upgraded. The on the date of upgradation, all the accounts should have nil overdues. So this is we have to keep in mind. Okay. So Now, basically, all the three accounts should come to SMA 0. They should become not SMA 0, sir. They should become standard. They should not have nil. They should have nil overdues. So if they are SMA 0, it means they have overdue for 1 day. One month interest is overdue. It can be 1 day also. 1 day also. So because SMA 0 starts from 0 to 30. So, yes. So we'll see an example as to how SMA 0, 1, 2 happens. So Right. the nil overdue should be there. If it is under SMA category, it means something is overdue and the account cannot be upgraded. So you mean to say कि अगर उसमें as on the date of upgradation आपके एग्जांपल में कार का तो उसमें पूरा दे दिया, लेकिन हाउसिंग लोन में एक दिन का इंटरेस्ट बाकी है, तब वो पूरा का पूरा तीनों के तीनों अकाउंट अपडेट नहीं हो सकते. नहीं हो सकते. एक भी अकाउंट नहीं होगा. कार लोन भी नहीं होगा. हाँ जी. ठीक है. तो ये इम्पोर्टेंट है. दूसरा इसके अंदर क्या आता है सर, विच इज अगेन वेरी क्रिटिकल एंड आई हैव सीन मिसयूज ऑफ दिस फैसिलिटी कि अकाउंट में रिकवरी आ गई और अकाउंट क्लोज डाउन. I'll tell you a very interesting case, which is an actual case which has happened in banking. So somebody called me up, told me, sir, I am doing an audit for one of our rural branches for a public sector bank. Last year, say the NPA list said there are 1,500 accounts NPA in the branch. ठीक है, 1,500 account. This year the list is very small. It is comprising of only 200 accounts. So करीबन 1,300 अकाउंट में उन्होंने क्लोज डाउन कर दिया. वो कह रहे जी रिकवरी आ गई और अकाउंट क्लोज डाउन. तो मैंने कहा सीम्स वेरी हाईली अनलाइकली स्पेशली इन केस ऑफ रूरल ब्रांचेस, बट प्लीज चेक द सोर्स ऑफ रिकवरी. कह रहे सर मुझे मैनेजर ने शील्ड भी दिखाई व्हिच ही हैज रिसीव्ड फॉर रिकवरी इन एनपीए. डोंट वरी अबाउट द शील्ड, प्लीज गो एंड चेक द सोर्स ऑफ रिकवरी. So they find out a very interesting scheme which the bank has done. So what the bank has done, say रामलाल account है, उसमें 10 लाख का डेबिट बैलेंस था. Account was in the NPA category in the last year. So on 31st January morning, the branch manager made an entry. Ramlal account credit 10 lakh rupees, suspense account debit 10 lakh rupees. Ramlal account के अंदर recovery आ गई, Ramlal account closed. Now the problem is there is an entry outstanding suspense. So what they did in the evening, there is another entry which he did. Ramlal new account debit 10 lakh rupees, suspense account credit 10 lakh rupees. तो सस्पेंस जीरो हो गया. रामलाल जी को सुबह भी 10 लाख देने थे, शाम को भी 10 लाख देने हैं, बट the NP was shown as recovered, and he was basically hoping that the auditor would not see accounts given on 31st January because they are not likely to slip into NPA category otherwise also, because 90-day norms would not be met. So they did for around 1,300 accounts. So please be very careful, sir. This is something which is also fraud. रूरल ब्रांचेस में पर्टिकुलरली जो एक समरी एक लिस्ट बना के उसमें कैश रिकवरी डालते हैं, जिसको पलटा कहते हैं सर हम. कि वो क्या करते हैं कि सुबह एक अकाउंट के अंदर रिकवरी दिखाते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, एंड दी फिर वो थोड़ी देर बाद की डेट में दिखाते हैं कि जी हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया फॉर डिसबर्समेंट फॉर द नेक्स्ट अकाउंट. तो इसमें जनरली हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि सर प्लीज गो एंड सी दी वाउचर्स. Voucher for deposit may not be signed or may be signed by anybody, but the voucher for withdrawal needs to be signed by the borrower. Yes. So please check the voucher. If the vouchers are not there, please state specifically कि भाई vouchers नहीं थे, हमने चेक किया, इतने सैंपल केसेस चेक करें, and based upon it you can ignore those entries and classify the account as an NPA. एंड पर्टिकुलरली वो एक लिस्ट जो पहले इंटरेस्ट की लिस्ट बनती थी ना पूरे लेजर की, एक इंटरेस्ट जिस दिन लग रहा है
अकाउंट नंबर सो एंड सो, अमाउंट इतनी, अमाउंट अकाउंट नंबर अमाउंट, वो पूरी लिस्ट बना के वो एक कैश रिसीट की एंट्री डल जाती है और फिर उसे विड्रॉल दिखाते रहते हैं। तो ये तो एक वो जनरल एक पर्टिकुलर डे में सारे के अकाउंट को पलटा कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली वो मैनेज कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। एटलीस्ट कम से कम वॉचर तो सेपरेट सेपरेट बनाए। हाँ, एंड आई थिंक इम्पोर्टेंट पॉइंट इज सर, जहाँ पे बिकॉज नाउ दिस इशू इज नॉट एन अपरेंट इशू, आपको थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ के कहीं ना कहीं एक एविडेंस बनाना पड़ेगा कि भाई ये जो एंट्रीज हैं ये एक्चुअल एंट्रीज नहीं है, देयर इज ओनली अ क्रिएशन व्हिच हैज बीन डन सम, जिसको मैं क्रिएटिव अकाउंटिंग कह रहा हूँ, डन बाय द ब्रांच टू सेव द अकाउंट फ्रॉम बिकमिंग एनी, देन ओनली यू विल बी एबल टू डिक्लेयर इट। अगर आपने सिंपल उसको लिखा है विदाउट एक्सप्लेनिंग व्हाई यू हैव डन इट, तो क्या होगा कि वो सीएसए के पास लेके जाएंगे, who may not be aware of how the exact nature why you have done it, the exact reason for it, तो कई बार वो चीजें स्लिप भी हो सकती हैं। तो again my one of my recommendation is that wherever you do audit, put a MOC, then also prepare an explanation report or a detailed report about wherever you have done a MOC, give the reasoning for it, enclose it along with the reports, so that anybody who reads the report, reads the MOC, would be able to gather the reason why you have declared any account as an MOC, under MOC, or any other, why only NPA, any other cases where you may have done MOCs, they would be able to understand the reasoning for this. So it really helps. Okay. So this is, I think, one of the critical activities we should do. And in case you find any account where there is a compromise or a OTS has been done, so LFAR specifically asks you for all such cases. So this comparison, sir, you'll be able to find all such cases also where there is an OTS or a compromise has been done, or there is some write-off which the bank has done. So that you will be able to find out all such cases also. तो आई थिंक दिस इज वेरी क्रिटिकल, बिकॉज जैसे मैं मजाक में लोगों को कहता हूँ थोड़ा सा कि सर आपका ऐसा ना एनपीए की लिस्ट ना, मतलब आपका थैला हो, उसके ऊपर आप अंदर से और एनपीए डालने की कोशिश कर रहे हो थैले में, और पता चले नीचे 6 हो जो एक्चुअली में थैले के अंदर रहना चाहिए, वो नीचे से धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो, तो आप उसको जरूर चेक करिए एक्टिविटी को। दूसरी चीज इसमें आती है सर, एक बड़ा छोटा सा पॉइंट है बट बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, इज दैट वी डू ऑडिट ऑन अ सीबीएस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम कुछ रिपोर्ट साइन करते हैं, बैलेंस शीट, पीएनएल वगैरह, उसके कुछ शेड्यूल्स होते हैं। वो आप क्या लगता है आपको, क्या वो सीबीएस सिस्टम से ही जनरेट होती है रिपोर्ट्स, या कोई और सॉफ्टवेयर या कोई और मेथड इज बीइंग यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ दीज रिपोर्ट्स? तो क्या लगता है आपको? इफ यू कैन जस्ट आंसर इन द चैट बॉक्स। So why it is so critical, I explain to you in a different fashion, maybe to explain to you the risk which I am pointing out. Say you do an audit for a client on Tally. He gives you a data on Tally, you do the audit on Tally. Then he gives you a balance sheet P&L, which is drafted somewhere else, say on Excel. And he gives you कि सर ये आपके हिसाब से मैंने बना दिया और आप उसको साइन कर दीजिए. As per your audit, I have prepared it. So will you do a analysis in terms of matching that balance sheet P&L which has been given to you with the CBS, with the accounting system, with the Tally, and see whether it matches with the data given in the Tally, whether you will do that? If you are going to do that, sir, the same thing applies to a bank also. Reason is, sir, reason is because all these reports are generated through a middleware, which takes data from the CBS system and gives the output in the desired format. Now, this software is something which we don't audit, whether we do not have any access to this software, and every bank is nearly using that kind of a software. Now, please check why it is so important, because we have seen manipulations happening sometimes. We have seen cases where errors have occurred in these softwares, resulting into a data which is unreliable. We have seen cases, sir, जहाँ पे advances की figure in the GL is generated by the CBS system is not matching with the figures in the balance sheet itself. So please be careful, sir. At least match broadly the GL and PL with the statement which has been given to you for signatures. Very important. Okay.
नेक्स्ट कैपिटल एडुकेसी सर, क्या चेक करते हैं कैपिटल एडुकेसी की स्टेटमेंट में सर? So when we do a physical seminar, I can see actually a lot of smiles when I ask this question, sir. And lot of silent smiles, I say. साइन ही करके आ जाते हैं एक्चुअली। हाँ. So very important, sir. Please understand कि I can understand a lot of times we are not aware of the detailed guidelines of the Basel III, and they are quite technical also in nature. I am not asking you to go through the Basel III norms. What I am basically asking you to check. So basically क्या है, जैसे एडवांसेस के बारे में आता है, तो एडवांसेस के अंदर वो कुछ टेबल्स क्रिएट करता है, कुछ बकेट्स क्रिएट करता है, उसके आगे टोटल आता है, फिर उसके अंदर कुछ रिस्क वेट लगता है और फिर उसका कुछ बनता है। आप रिस्क वेट को मत समझो, चलो कोई बात नहीं, बिकॉज इट वुड बी फॉर ऑल दी कंप्लीट बैंक्स, इवन दी CHAs in any case going to check it, ठीक है, दी सेंट्रल ऑडिटर्स, बट दी बकेट्स इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो सतीश जी ने आपको बात कही थी ना, जो बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने कही कि आपका प्रायोरिटी टू नॉन प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी टू प्रायोरिटी, या सिक्योरिटी वाइज चेंजेस, या इवन दी क्वालिटी वाइज चेंजेस, इट वुड अफेक्ट बेसल 3 directly. Okay, so very important, the bucket is your responsibility. I have seen cases, sir, advances का breakup आया in buckets, उसका total is not matching with the total in the balance sheet. ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी दो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, एक कह रही है एडवांस एक्स है, दूसरी कह रही है कि एडवांस वाई है, और ऐसा ना हो कि हम दोनों को साइन करके आ जाएं कि दोनों सही है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। दूसरा सर, बकेट जो है वो CBS से जनरेट नहीं होती डायरेक्टली, अगेन दिस कोलेशन हैपेंस ऑन अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जनरली। तो प्लीज चेक, उनसे मांग लीजिए वर्कशीट्स की, भाई किस बकेट में कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूडेड है। सर ब्रांच को तो पता ही नहीं होगा, नहीं ब्रांच पता को तो नहीं सर वो पता मंगवा होता। शुरू में मंगवा जब ये दो। आई थी बेसल 3 बेसल 2, तब बहुत इशू थे, अभी भी इशू है। मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, आई डोंट नो। बिल्कुल सर, आज भी है सर। और अच्छा इश्यूज सर मेरे लिए पता है क्यों है, वो है बेसिकली, एक तो जो आपने बात कही कि एडवांसेस इनकरेक्टली क्लासिफाइड। हाँ जी। दूसरा इश्यूज क्या है सर, जब ये कोलेशन ऑफ डाटा होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू ना, तो उसमें गलतियां हो जाती है, कई बार जानबूझ के भी की जाती है, कई बार हो भी जाती है, मतलब दे आर जेन्युइन एरर्स। तो वी आर रिक्वायर्ड टू चेक इट, बिकॉज विदाउट चेकिंग अगर वी डू, देन वी आर क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम फॉर अस, ठीक पर है। सर जैसे हाँ, मैंने बताया, मैंने जनरली मेरी एमओसीज में प्रायोरिटी, नॉन प्रायोरिटी, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड भी होते हैं, और यूआरआई के भी होते हैं। तो जो मैं एमओसी दे रहा हूँ, उसका इम्पैक्ट तो मैं बेसल 3 में नहीं डाल के दे रहा, या उसका भी इम्पैक्ट डालना है, उसकी भी एमओसी देनी है बेसल 3 so की। there are two ways of looking at it. If you are comfortable enough, then you should give a MOC in case you classify an account as an NPA. So आपकी बेसल 3 का जो कैपिटल एडुकेसी का है, उसका भी एमओसी ऑटोमेटिकली आपने टच कर दिया। देयर कैन सर नॉट देना बी केस। ऑटोमेटिक, मतलब हमने हाँ, स्पेसिफिकली तो नहीं देना। हाँ, तो कई बैंक्स तो एक्चुअली आपसे मानते ही नहीं है, क्योंकि बेसल 3 का जो एमओसी है ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि अब ये किस बकेट में जाएगा, है ना। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो यू कैन डेफिनेटली प्रोवाइड फॉर एमओसी, और नहीं तो कम से कम ये मेंशन करके आ जाइए कि सर जो बेसल 3 का जो एमओसी है उसमें मेंशन कर दीजिए, दिस इज द प्री एमओसी डाटा पे हम साइन कर रहे हैं कि ये मिल रहा है, ओके। राइट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो वो क्या हो जाएगा कि कहीं ना कहीं, इफ वी इवन देन साइन अ नील एमओसी, तो कहीं ना कहीं हम एक गलत सर्टिफिकेशन हो रही है। सो दिस इज दैट। राइट राइट। तो ये जरूर आपको एक्टिविटी करनी है, ओके। एक आता है सर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज। ना कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज क्या होता है सर, बेसिकली इसको इग्नोर मत करिए, ये मत सोचिए कि सर ये तो इसको क्या देखना है, तो कोई मतलब इंपॉर्टेंट एरिया ही नहीं है। Contingent liabilities for a bank includes two areas basically. One is contingent liabilities on constituent accounts, which are basically your non-fund based limits like BG, LC, bills for collection. It can include SBLC, standby letter of credits. ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, and what we have seen is a lot of frauds happening in this area. Even the Nirav Modi scam, if we talk about, was a fraud in the non-fund based limits, right? So very important area for you. Then there can be other contingent liabilities, like in case of any other company, like claim against the bank not acknowledged at that, ठीक है, तो उसके लिए भी you have to be very careful, okay। तो उसके अंदर पता क्या कैसे करना चलता है है सर, ये आपने टच किया है, पता कैसे चलता है? बैंक वाले तो कॉरस्पॉन्डेंस जब तक आपको चांस की बात है पता चल जाए, टू माय मैं ओपिनियन। बताता हूँ ना सर, सतीश जी, जो हमने हाँ जी। किया है ना, दो चीजें जरूर करनी है आपको उसमें।
एक तो जो पिछले साल क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज एट डेट थे, और इस बार के लिस्ट को जरूर कंपेयर कर। जो जनरली पिछले साल क्लेम्स थे, या तो भाई वो केस खत्म हो गया तो वो हटेगा, या वो एक्चुअल लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो गया तो वो हटेगा, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि पिछले साल तो दिखा रखा था, इस बार दिखाने रखा, स्टेटस वही चल रहा है केस का। दूसरी चीज है आपके लिए सर, हम क्या करते हैं, लीगल एक्सपेंसेस के वाउचर देते हैं, और उस वाउचर से हम जज करते हैं, बेसिकली चेक करते हैं कि कोई ऐसा केस जिसमें बैंक इज अ डिफेंडेंट, it is at least a contingent liability for them. And sometimes when we go through the legal files for such cases, we suddenly realize that there is the need for an actual liability. तो एक एग्जांपल बताता हूँ, एक जगह पे क्या हुआ कि बैंक ने एक एटीएम खोल दिया किसी रेलवे स्टेशन पे, ठीक है। छोटा सा रेलवे स्टेशन था वहां का, लोकल एरिया का, वहां पे एटीएम खोल दिया। तो बैंक को नोटिस दे दिया रेलवेज ने कि भैया आप हमारे रेंट दो, अमाउंट पेनल्टी करके उन्होंने डिमांड भेज दी। एंड बैंक वाज एग्रीइंग ऑन पेइंग अ सर्टेन सम, देयर वाज सम डिस्प्यूट कि भाई हम इतना देने के लिए बैंक रेडी था, और रेलवे से उससे कुछ ज्यादा मांग रहा था, उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट वगैरह भी। तो इन एनी केस वॉट एवर अमाउंट दे आर एक्सेप्टिंग इज पेबल बाय द बैंक, उसका तो हो सकता है आपको एक्चुअल प्रोविजन भी करवाना पड़े, राइट। So sometimes when you look at them, you can actually find out issues which are bigger than only contingent liabilities. Okay? तो इस तरह सर के अब ये इशू। जो आपने लीगल बिल्स हैं, लीगल बिल्स कई बार तो वो अकाउंट में डेबिट होते हैं। मेरा थोड़ा थ्रोट खराब है, काइंडली बियर विद नहीं मी। कोई बात। हाँ कई बार तो वो अकाउंट में ही डले होते हैं, बोरोर अकाउंट्स में, उनको भी चेक कर रहे हैं। उनको तो मेरे नहीं ख्याल सर, जरूरत नहीं है। मेरा मेरा पर्पस क्या है इसके अंदर, कि भाई जहाँ पे बैंक ने केस फाइल किया है अगेंस्ट अ बोरोवर फॉर रिकवरी, तो वो तो मेरी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी नहीं है, उसमें नहीं से है। तो कॉन्टिजेंट नहीं आने वाली। हम्म। मेरी लाइबिलिटी आने वाली है जहाँ पे केस हैज बीन फाइल्ड ऑन द बैंक एंड द बैंक इज अ डिफेंडेंट, तो तो उसके वो जो एक्सपेंसेस है वो बोरोवर अकाउंट को डेबिट नहीं हो रहे होंगे होएंगे जनरली। नहीं, हाँ। हाँ, वो अपने हमारे लीगल एक्सपेंसेस में आ रहे हैं, तो पर वो मेरे लिए दूसरा ज्यादा सिनेरियो, दूसरा हम्म। सिनेरियो होता है कि बैंक जो लीगल एक्सपेंसेस में ही डेबिट करता रहता है इंस्टेड ऑफ बोरोर्स। हाँ ये भी हो सकता है सर, ये भी हो सकता है, और वो स्पेशली बहुत लंबी एनपीए लिस्ट होती अकाउंट्स है में, कई बार। एनपीए अकाउंट्स में बहुत से बैंक एक्चुअली लीगल एक्सपेंसेस भी रिकवर नहीं करते फ्रॉम द बोरोवर्स अकाउंट, बिकॉज वो कहते हैं कि जब वो एक्चुअली में रिकवरी आएगी जब हम रिकवर करेंगे, ऐसे रिकवर नहीं करेंगे सर, डेबिट और वो नहीं तो करेंगे। ईयर टू ईयर प्रॉफिट लॉस में चला जाता है, वो फिर हाँ रिकवर जी, होता ही नहीं है। आप तो इसी साल का देख सकते हो सर, क्योंकि हाँ। अनलाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स की आदत क्या होती है ना सर, कि वो फीस लेते रहते हैं अपने क्लाइंट से। हमको तो आदत ही नहीं है उस तरीके से फीस लेने की। उनकी आदत क्या है कि सर फाइल को हाथ लगाने से पहले फीस ले लेंगे, और फिर जब भी आप अपनी शक्ल दिखाओगे उनको, कोई भी डेट पड़ेगी तो कुछ ना कुछ उनको चाहिए ही। तो जैसे आप मंदिर जाओगे तो भगवान जी को कुछ तो प्रसाद चढ़ा के आओगे ना, तो उनकी भी वर्किंग ऐसी है कि वो कुछ ना कुछ प्रसाद मांग ही लेते हैं आपसे। सो most probably you will find some entry in the books where some expenses have been paid to the that legal officer or the lawyer basically, तो वो आप देख सकते हैं। उसकी Then again स्क्रूटनी, you cannot उस do लेजर की a hundred स्क्रूटनी करेंगे percent। तो मिल जाएगा कुछ। मिल सकते हैं बिल्कुल। See पर we can अब मेरा only क्वेश्चन increase है, the सपोज मैं probability। 200 एंट्रीज हैं सर होती नहीं पूरे इतनी साल में। एंट्री, इतनी हम्म। एंट्री जनरली आपको नहीं मिलेंगी। और अगर वो एंट्रीज होंगी भी ना, तो आप एक्चुअली अगर उसको देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द एंट्रीज आपको केस का नंबर वगैरह कुछ मेंशन नहीं रहेगा उसमें नरेशन में। तो एक बार ही आपने एक एंट्री देखी, आपको बता गया कि भाई रामलाल का जो केस है ये तो जी बैंक ने फाइल किया है, तो जितनी एंट्रीज और आ रही है रामलाल की वो तो आप इग्नोर करके आगे मूव कर ही सकते हो। राइट, वो दैट वे यू हैव टू चेक। ठीक है। ठीक है सर। तो आई थिंक रेदर देन फ्रॉम ओनली बेसिस कि भाई अगर कुछ मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इग्नोर करेंगे, उससे एक बेटर वे है इसको चेक करने का, कि वेयर दी प्रोबेबिलिटी वुड इंक्रीज, कि अगर कोई ऐसी एंट्री है जो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी वो हमको मिल जाए। एक क्वेश्चन है सर निधि जी का, हाँ जी। और इन्होंने दोनों साइड डाल दिया, चैट में भी डाल दिया और क्वेश्चन आंसर में भी डाल दिया है, कि यूजुअली वी रेफर सीबीएस फॉर इंडिविजुअल वाइज अकाउंट, however branch manager usually gives a printout of balance sheet P&L and borrow wise advance accounts. Not sure if they use CBS or any other system for these reports. Is there any way we can verify the total value of advances in bank software? Okay, so basically Nidhi ji, please understand
कि जो ये सॉफ्टवेयर है हर एक बैंक नीडली यूज कर रहा है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, क्योंकि सीबीएस सिस्टम से जनरेट नहीं हो पा रही है इतनी इंफॉर्मेशन। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर एसबीआई की बात करूं तो एक सीसीबीपी स्टेटमेंट देते हैं, तो सीसीबीपी एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू वो स्टेटमेंट वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिविजुअल अकाउंट्स को मैच करना शुरू कर दें, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ा मेमोथ एक्सरसाइज हो जाएगा। व्हाट आई एम आस्किंग यू कि आपको सिस्टम से जीएल और पीएल जनरेट हो सकते हैं, वो आप ले लीजिए। एटलीस्ट टोटल लेवल पे जो चीजें मैच हो जाए ना, कि मेरी टोटल एडवांसेस एज पर दी सीबीएस सिस्टम इज मैचिंग विद द टोटल एडवांसेस एज पर द बैलेंस शीट प्रोवाइडेड टू। ठीक है ना, वो मेरे को ज्यादा कंसर्न है उस चीज के ऊपर ना। तो आई थिंक इफ यू आर एबल टू डू इट, देन आई थिंक यू आर जस्टिफाइंग द लोन व्हिच हैज बीन गिवन। पर इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जनरली जब हम उनसे मांगेंगे सीबीएस सिस्टम की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस, वो उठा के वही वाली दे देंगे जो आपको दूसरे सिस्टम से, उन्हें सॉफ्टवेयर से निकाल के मिली हुई है। हाँ हाँ, तो वो हमें पता होना चाहिए कि हम एग्जैक्टली क्या मांग रहे हैं, और उसका हम उनको गाइड भी करना पड़ेगा कि हम क्या मांग रहे हैं एग्जैक्टली। दूसरी चीज आती है सर, दूसरी चीज इसमें आती है, अभी मॉर्निंग में ही मेरे पास किसी का फोन आया, कोई मैं सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था, तो वहां पे किसी ने मेरा नंबर लिया होगा, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मुझे एक्सेस किसी बैंक का एक ब्रांच मिल गई है, और वहां पे बहुत सारी कुछ ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि पैकिंग क्रेडिट एडवांसेस हैं, तो ये इसके अंदर एग्जैक्टली मुझे क्या देखना है। फिर देन ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि वहाँ पे बायर्स क्रेडिट भी है, वहां पे ये भी है। तो मैंने कहा सर आपने ये पूछा उनसे कि कहीं आप फॉरेक्स ब्रांच को ऑडिट करने तो नहीं जा रहे हो? तो उसने कहा सर मैंने पूछा नहीं। फिर मैंने कहा अच्छा आप उनसे पूछो। तो जब उन्होंने पूछ के बताया तो पता चला कि ये फॉरेक्स ब्रांच का ऑडिट। तो ही वॉज नॉट इवन अवेयर कि मैं एक फॉरेक्स ब्रांच को ऑडिट करने जा रहा हूँ। तो समटाइम्स नोइंग और ऑडिटिंग हियर बिकम्स वेरी क्रिटिकल, राइट। तो मैंने फिर उनको बताया कि भाई आप फॉरेक्स ब्रांच का कर रहे हैं, इवन एलएफआर के अंदर एक एडिशनल आपको एनेक्शन भी फिल करना है विच अप्लाइज टू ओनली फॉरेक्स ब्रांचेस। और उसके अलावा कुछ चीजें मैंने उनको और बताई कि जो आर वेरी क्रिटिकल इन केस ऑफ फॉरेक्स ब्रांचेस। एनीवेज, अब उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है विच इज द बेसिस हाउ नीरव मोदी स्कैम एक्चुअली हैपेंड is there is a software called as Swift, which is basically a messaging system between two financial intermediaries like banks. Now, this Swift system actually can create liabilities for the bank, like in case of Nirav. So any message you send through Swift, it is considered as an authenticated message, and your liability can be created through this message. So you will have to check when you go to such a branch where Swift system is there installed, where the bank can send, that branch can send Swift messages. That what is the medium through which you will ensure that whatever Swift messages has been sent, whether they have been correctly recorded in your CBS systems. What is the control check? You will not be able to do 100% verification, that I can assume. You may sit for 1 month in the branch and then only you will be able to do it, which you don't have in any case. So you'll have to check the system through which this can be verified. You can place whether you may be able to place a reliance on that system, because this is a very, very serious issue. And of course, we have seen consequences of this not being monitored or this not being controlled in the Nirav Modi scheme, right? So वो जरूर एक important area I think जो आपको check करना है। Then एक बड़ा क्रिटिकल चीज आई सर, कारो 2020 लास्ट ईयर से एप्लीकेबल है, हम सबने साइन करी होगी बहुत सारे अपने क्लाइंट्स के केस में। तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्लॉज आया, क्लॉज जो था .2 क्लॉज बी के अंदर उन्होंने कहा सैंक्शन वर्किंग कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़ रुपीज इन एग्रीगेट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द वर्किंग कैपिटल, सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट्स। तो जो स्टॉक जो आपने स्टेटमेंट्स फाइल की बैंक को, द क्वार्टरली स्टेटमेंट, वेदर दैट वाज मैचिंग विद द अकाउंटिंग डाटा। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी important area for us as a person who is doing audit for any branch where this account is being maintained. I'll show you a snapshot of one of the listed companies. This is actually from the annual return of one of the listed companies from which I have taken this data. So it talks about certain banks. It talks about sundry creditors. It says the amount as per the books account. If you see the last line, actually, 904.32 million. So 90 crores is the sundry creditors.
Reported was only 11 crores. And there is a shortfall of 79 crores. Now think of it, it has two impacts. One is the impact on your DP calculation, and then it would affect maybe NPA levels also. And secondly, what RBI is saying as per the Master Circular of Frauds, that if a wrong statement is submitted to the bank with the intention of drawing excess bank funds, then it amounts to a fraud. तो इसका impact fraud तक जा सकता है. Okay, so very important that we actually check for these cases quite on a serious note actually. और हो सकता है कई cases में जहाँ पे especially there would be problem, the customer may not have submitted the Caro report itself, and sometimes the bank managers are unaware. They are not even aware that there's some Caro report which is required. So please ensure कि जहाँ जहाँ पे आपको लगता है Caro report should be there, please ensure to go through the Caro report. ठीक है. पर कारो में तो चलो मार्च 22 से आ गया रिपोर्ट करने के लिए, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने फिर भी गोलमोल आंसर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट्स जनरली गलत ही हैं जो बैंक्स को जा रही हैं डीपी कैलकुलेट करने की वजह से. और 90% केसेस में अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट की फिगर और स्टॉक स्टेटमेंट की फिगर मैच नहीं करती हैं. तो उस केस में हमें सब में फिर फ्रॉड वाला एरिया डालना है. So very important, Satish. I think a very good point you have raised there. So my view on this is very clear, sir. My view is that if basically we are talking about a concept which is what we would say as a mens rea, basically. So there is one case where there is a change between the figures as reported to the bank and as reported as per the actual books of account. The difference is say 1% or 2%. So That's what you okay. can see, that is not a material difference. That may be due to some accounting errors, late entry, which may have been done, or there might be other justifiable reasons. So there does not seem to be a absolute reason of fraud or a fraudulent intention on the part of the borrower. But if the difference is as large as we discussed just now in the example, right, and it is there in nearly all the months, right, there can be an error in one month कि भाई मुझे 110 लिखना है तो गलती से मैंने 11 करोड़ लिख के भेज दिया बैंक. Then I should have revised the statement. That is right. But और एक है कि मेरा every month there is a difference which is being reported. Then it shows that definitely there is an intentional issue, right? So we will have to take a call based on it, because declaring somebody as a fraudster itself requires that we do a bit more due diligence than declare somebody as an NPA, because NPA can be due to hundreds of factors, right? But when we declare somebody as a fraudster, then I think we should accept a higher level of confirmation, higher level of basically due diligence before somebody is declared as a fraudster. This is how I look at it. राइट. इसमें सर जब आप इस पे आए तो मेरे को एक और क्वेश्चन आ रहा है. डीपी जब कैलकुलेट करते हैं उसमें जनरली जो जनरल है उसमें हम स्टॉक्स लेते हैं, उसमें से क्रेडिटर्स माइनस करते हैं पेड स्टॉक के लिए, पेड स्टॉक लाने के लिए, उसका मार्जिन रिड्यूस करते हैं. अब फिर डेटर्स पे आते हैं. कई बार क्या होता है, मान लो सपोज स्टॉक है 10 करोड़ का, क्रेडिटर्स है मान लो 20 करोड़ के, तो 10 करोड़ के जो क्रेडिटर्स हैं वो डेटर्स के अगेंस्ट भी एडजस्ट होने बाकी हैं. स्टॉक तो जीरो हो गया, तो डेटर्स में से भी वो बैलेंस जो डिफरेंस हमारा है क्रेडिटर्स वो भी माइनस होगा. और डेटर्स भी हमें लेने हैं अप टू अ पर्टिकुलर एज, 90 days 120 days व्हाटएवर इज एज पर सैंक्शन टर्म्स. इतना करके मार्जिन माइनस करके हम डीपी निकालते हैं जनरली बैंकर्स. लेकिन बहुत केसेस में एडवांस टू कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड एडवांस टू सप्लायर्स होते हैं, एंड दीज फिगर्स आर क्वाइट ह्यूज. स्टॉक और बुक डेट से ज्यादा होती है कितनी बार. उसका क्या करना है? जनरली मेरे हिसाब से वो लेना चाहिए, पर एक्सेप्ट नहीं करते बैंकर्स. आपका क्या व्यू है इसमें? सर देखिए, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो आपने क्वेश्चन रेज किया है ना सर, इसके अंदर बहुत योर क्वेश्चन इज वेल टेकन and it is a good question. Now you will have to look it from a very different angle actually. इसको ना इसका short answer नहीं है. You will have to understand how credit assessment actually happens when we are going to give a working capital finance.
So basically, working capital finance means we are basically financing the working capital gap between the current assets less the current liabilities. अब करंट एसेट्स में आप बैंक बैलेंस या कैश को तो नहीं करने वाले फाइनेंस, तो आप बेसिकली जो करते हो वो स्टॉक को, बुक डेप्ट्स को, और हो सकता है कि आप जो एडवांस गिवन टू सप्लायर्स को इसको फाइनेंस कर रहे हो. ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ कोर्स द बेसिक आइटम्स वुड बी द सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बेसिकली देन द एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स. ठीक है, तो ये वर्किंग कैपिटल गैप को आप फाइनेंस कर रहे हो. नाउ इफ द अमाउंट इज नॉट मटेरियल, सो वन इज द बोर्ड पॉलिसी कि भाई उनकी अपनी पॉलिसी क्या कहती है, हमें कैसे करना. इफ द पॉलिसी इटसेल्फ सेज कि भाई अगर अमाउंट हमें लेना है एडवांस गिवन टू कस्टमर एंड एडवांस गिवन टू सप्लायर, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड एडवांस गिवन टू सप्लायर, तो हमें लेना ही है. इफ इट इज साइलेंट then generally we do not take, because then we go as per your own policy. We are not going to change the policy. But if the amount is substantial and you feel it affects the calculation of that working capital gap itself, and you are able to prove it कि भाई ये तो working capital से आपका gap ही नहीं बन रहा, तो आप finance किस चीज को कर रहे हो. Understand? Ultimately the money is given for the working capital. If there is no working capital gap, या मेरा गैप तो बन रहा है सपोज करो 10 लाख का और मेरे को फाइनेंस मिल गया 50 लाख का या 1 करोड़ का, then there is a problem that there is a diversion of fund. When the fund is not being used for working capital means it is used for something else actually. तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो आप किस तरह से इसको प्रेजेंट करते हैं इशू को ना, वो इम्पोर्टेंट है. So if you are able to impact the working capital gap in that sense, and it will be only impacted अगर दोनों की nearly same figure है, क्योंकि आप एक को नहीं ले पाओगे. आप ये नहीं पाओगे कि एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर तो ले लूंगा पर एडवांस गिवन टू सप्लायर नहीं. अगर लोगे तो फिर दोनों फिगर्स को, अगर दोनों नियरली सेम है तो वुड नॉट इम्पैक्ट. बट एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज अ वेरी लार्ज फिगर एंड एडवांस गिवन टू सप्लायर है ही नहीं है, बहुत छोटी सी फिगर है, तो डेफिनेटली इट शुड हैव अ इम्पैक्ट अपॉन योर क्रेडिट प्रोसेस. अब इसमें जो आपने बताया कि जो सब्सटेंशिएट हमें करना है, जब फाइनेंस दिया उसमें जो सीएमए डेटा बनाया उस समय बैलेंस शीट में एडवांसेस वो दोनों साइड के हैं, अगर उन दोनों साइड के एडवांसेस को कंसीडर किया है वर्किंग कैपिटल गैप में, तब तो हमें फिर कंसीडर नहीं करना है. यहाँ पे डीपी में डीपी कैलकुलेट करते हैं, कंसीडर करना है सर. सी अगेन हम उसी बात पे आ रहे हैं कि अल्टीमेटली lot of times banks cannot envisage everything at the time of doing credit assessment. It is how intelligent they are at the time of assessment. Sometimes they are not able to assess everything. Later on, the process why the review is so important, a renewal is so important, that they should be able to correct it after the first year if some changes are required. But what is happening practically in case of public sector banks a lot of times is that actual renewal process is not being done in a correct fashion, or is not is done in a very very summary manner, or in a very routine manner, rather than taking it as a credit analysis. So sometimes these things actually get missed out. And I think very important is that in case it has a substantial figure, sometimes it has, then it should be part of my credit assessment, and something should be written in the of course the letter also, that it should be considered or not considered for that. So proposal would tell whether to take or not. It would, but if it has a very material impact, as I discussed with you, then even if it is silent about it, you can take a call. Then, but then you'll have to do a little more. See, one is which is specifically mentioned somewhere, so you don't have to do anything. It is mentioned in the letter itself. If you are going to justify going beyond the letter, then you will have to justify it in the sense that it impacts the actual credit assessment of that account, and then only the bank would accept it, or anybody who reads that would be able to accept the logic behind it. Otherwise, so double finance हो गया. Bilkul, absolutely. There is no doubt. So Anuji is asking how to make control on SWIFT matches. So we don't have to control SWIFT, man. We have to control the recording of the transactions in the CBS system. So anything which is sent through SWIFT,
how it is getting recorded in the CBS system, whether the system has some controls, checks, so that whatever is being sent through Swift, an appropriate entry is getting recorded in the books of account. I'll give you an example, very important. One is somebody has sent us Swift, no recording has been done in the books of account. This is a very serious error. Okay. Which was there until Nirav Modi. Like Nirav Modi scam. Secondly, it can be an error which sometimes people think कि भाई record हो गया तो okay हो गया, right? The errors can be that I have done, say, I have sent a bank guarantee, outward bank guarantee, for an outward bank guarantee कह देते हैं FOBG. हमने वो भेजी. The amount of that bank guarantee was suppose 1 crore rupees. और एंट्री करते हुए सिस्टम में वो रह गई 10 लाख रुपए की. तो एंट्री तो हुई पर वो इनकरेक्ट अमाउंट से हो गई, तो मेरी लाइबिलिटी तो दिखाएगा वो 10 लाख की दिखाएगा, जबकि स्विफ्ट मैसेज के हिसाब से मेरी लाइबिलिटी 1 करोड़ की. देयर कैन बी अदर इश्यूज आल्सो, मतलब देयर कैन बी मल्टीपल इश्यूज. आई हैव बीन डूइंग फॉरेक्स ब्रांचेस फॉर वेरी लॉन्ग टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द रिस्क. तो देयर कैन बी इश्यूज लाइक सपोज करो मैंने एक एलसी इशू, लेटर ऑफ क्रेडिट, एफएलसी, फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट है, 1 लाख यूएस डॉलर्स की इशू. देयर इज अ इंटरेस्ट क्लॉज, यूजांस इंटरेस्ट क्लॉज इन इट. तो मैंने 1 लाख तो बुक कर दिया, पर यूजांस इंटरेस्ट का जो क्लॉज है उसके इक्विवेलेंट लाइबिलिटी बुक नहीं करी, तो दैट वुड बी अंडर बुकिंग ऑफ लाइबिलिटी. So there can be multiple issues. So anybody who's looking at Swift and trying to analyze as to how much entry was required in the books of account should be able to understand कि भाई कहाँ पे क्या रिस्क है. ऐसा ना हो कि हम किसी ऐसे बच्चे को दे दें, अगर ये एक्टिविटी हम सैंपल पे कोई चेक भी कर रहा है, जो रिस्क को समझ ही नहीं पाई या डॉक्यूमेंट को समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है बैंक पे. एंड मतलब दीज काइंड ऑफ एरर्स वी हैव सीन हैपनिंग आल्सो इन केसेस ऑफ बैंक. तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी. तो आई एम नॉट आस्किंग यू टू check a control on Swift. I am only asking you what is the process, because you will not be able to check it yourself कि भाई सबकी रिकॉर्डिंग हुई कि नहीं. The point of basically keeping that in mind is that you will not be able to do it yourself, but this is something which is very important, which affects your audit materially. So please check the process. अगर आपको लगता है process में कहीं पे कोई material issues आ रहे हैं कि वो process actually में सही तरह से काम नहीं कर रहा है, या you are not gaining confidence कि the process is robust enough to ensure that all entries is recorded at the appropriate level, then maybe you should bring it out through your report. Limitation on that, the internal control processes in such cases. Okay. सर इतना सारा कुछ आपने बताया, जिसमें एक छोटा सा कम से कम समय लेते हुए आप ये जरूर बता दें कि जनरली क्या प्रोसेस है, क्योंकि नीरव मोदी के केस में तो ये आया ही था. शायद हम लोगों का बचाव भी इसलिए हुआ था कि जितने स्विफ्ट मैसेज हैं वो सीबीएस में रिकॉर्ड ही नहीं होते, इसलिए वो कुछ सेव आवर. व्हाट इज स्विफ्ट एक्चुअली, अगर आप इसको समझेंगे ना, स्विफ्ट इज ओनली अ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म. But how it affects us is that this messaging is considered as an authenticated message. So one bank sending a message to another bank would be considered as authenticated. He does not need to re-verify that message. Yes. So it can create liability for the bank, like in case of Nirav Modi. So what was the RBI answer to Nirav Modi was that they said that there should not be any direct entry to the SWIFT system. मतलब कोई किसी को भी एक्सेस ना मिले डायरेक्टली स्विफ्ट के अंदर एंटर करने की. दे शुड एंटर इट थ्रू दी सीबीएस सिस्टम. तो उनको क्या करना पड़ेगा, सीबीएस सिस्टम में जाके कोई एंट्री करनी पड़ेगी, और उस एंट्री के बाद उनको एक्सेस मिले स्विफ्ट के अंदर जाने की, और वहां से फिर वो स्विफ्ट मैसेज भेज सके. ठीक है. तो एक तो उन्होंने रिस्क आपका काफी हद तक कवर कर लिया. इफ इट इज हैपनिंग, देयर इज नो बैकडोर व्हिच इज स्टिल बीन अलाउड एट योर ब्रांचेस, कि आपको कुछ ना कुछ एंट्री तो सीबीएस में करनी पड़ेगी बिफोर यू एक्चुअली आर एबल टू एंटर द स्विफ्ट एंड सेंड एनी स्विफ्ट मैसेज. बट अब दूसरा पॉइंट आता है कि भाई मैंने एंट्री तो करी पर गलत अमाउंट की कर दी. ठीक है. तो क्या वो भी कोई कंट्रोल है कि नहीं है, वो जरूर आप चेक कर लीजिए कि बैंक कैसे उसको कंट्रोल कर रहे हैं. क्या वो कॉन्करेंट ऑडिटर्स, जैसे एसबीआई इज गेटिंग अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉन्करेंट ऑडिटर दैट दे हैव वेरीफाइड. उनको एक स्विफ्ट का डंप देता है डेली बेसिस पे, और उनको वो चेक करना होता है विद द लास्ट डे एंट्रीज, चेक कि भाई सारी की एंट्री हो गई और एप्रोप्रिएट लेवल पे हो गई.
ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, तो आप उससे देख सकते हैं। उसमें अगर कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो आज से वो रिपोर्ट कर रहा हो कॉन्करेंट ऑडिटर की भाई ये अप्रोप्रिएटली रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इट मे बिकम अ वेरी सीरियस इशू फॉर यू एज एन ऑडिटर। तो ये चीजें हैं जो आपको चेक करनी है। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट एक कोई निधि जी का अगेन एक क्वेश्चन है, इज देयर एनी शॉर्टकट कमांड थ्रू व्हिच वी कैन गेट द मास्टर डाटा ऑफ borrowers and depositors from bank CBS system? So maybe what I can do, Nidhi ji ki, maybe I can forward to Satish ji or you can send me a message. I'll forward the banks सॉफ्टवेयर की आपको लिस्ट दे दूंगा। इसमें एक लॉन्ग इंक्वायरी होती है, एक शॉर्ट इंक्वायरी होती है। सो इफ यू डू अ लॉन्ग इंक्वायरी एक्चुअली ना, तो उसके अंदर वो उसका मास्टर डाटा भी दिखा, तो एक्चुअली आप देख सकते हैं उसके थ्रू ना, अगर किसी अकाउंट का आपका मास्टर डाटा देखना है तो लॉन्ग इंक्वायरी में आपको नजर आता है। शॉर्ट इंक्वायरी में वो सिर्फ आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाता है, लॉन्ग इंक्वायरी में आपको मास्टर डाटा, तो दैट इज द रीजन। किसी ने anonymous attendee है, any specific things you would like to highlight while auditing the MSME and housing loan advances? सर MSME तो बहुत बड़ा एरिया हो गया, मतलब उसके अंदर स्पेसिफिक में क्या आपको बताऊं। It may be working capital loans also, it may be term loan also, it can be demand loans also. So a lot of things can be there which you might have to be careful about. अगर कोई MSME का बेनिफिट दे रहा है तो ऑफ कोर्स उसके अंदर उनके पास उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दी जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट थे MSME के, उसकी वैलिडिटी 30 जून 2022 तक की मुझे जो याद है वो बढ़ाई गई थी, उसके बाद वो नहीं बढ़ाई गई। तो जो न्यू उद्योग आधार है वो होना जरूरी है इफ ही इज टू अवेल द बेनिफिट ऑफ MSME। दूसरा उन्होंने एक चीज जो पिछले साल आई थी, मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ फॉर एनीबडी हु मे हैव मिस्ड आउट, कि उन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटीज को इंक्लूड कर दिया था MSME के अंदर, और उनका उद्योग आधार रजिस्टर करवाना भी उन्होंने अलाउ कर दिया था। तो वो एक मेजर चेंज आया था MSME को लेके। हाउसिंग लोन के अंदर तो सर आई थिंक जो नॉर्मल है, क्योंकि लार्ज पीरियड के एडवांसेस होते हैं, तो इसके अंदर तो आपको EMI बेस ही जनरली मिलेंगे। दूसरा इसके अंदर आप वो केसेस देख सकते हैं जहाँ पे स्पेशली देयर इज अ मॉरिटोरियम, या जहाँ पे स्पेशली अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि दिस इज समथिंग विच इज रियली अ सीरियस चैलेंज फॉर अस। तो ऐसे केसेस बहुत हैं, स्पेशली इन एरियाज लाइक नोएडा एंड गुड़गांव, जहाँ पे एक हाउसिंग लोन दिया गया और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे दिया गया, तो वहां पे क्या होता है, इक्विटेबल मॉर्गेज नहीं होता, देयर इज अ ट्राइपाइट एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक, द बोरोवर एंड द बिल्डर। तो उसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टी अभी कंस्ट्रक्ट पूरी नहीं हुई है, तो इसमें इक्विटेबल मॉर्गेज हो नहीं सकता ऑफ अ फ्यूचर प्रॉपर्टी। तो एक तो उसके अंदर सरसाई में चार्ज रजिस्टर्ड होना जरूरी है, दिस इज वेरी क्रिटिकल। ठीक है। दूसरा उसके अंदर आप चेक करिए सर, ऐसे केसेस हो रहे हैं आज की डेट में भी है जहाँ पे प्रॉपर्टी का एक तो है कि कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया और उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कि जो बिल्डर है उसने अपना जो टाइटल है लैंड का, जो उसने लैंड लिया है वो लिया है नोएडा अथॉरिटी से, उसकी पेमेंट ही पूरी नहीं करी। तो नोएडा अथॉरिटी इज नॉट अलाउइंग रजिस्ट्रेशन ऑफ दी प्रॉपर्टी। देयर केसेस वेयर दी कंस्ट्रक्शन बीच में छोड़ दी गई, कि बिल्डर हैज रन अवे, उसने कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं करी, अभी हम हाउसिंग लोन लेके बैठे हैं। वी हैव सीन केसेस। अभी तो एक तो NBCC ने वाज गिवन द ड्यूटी टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स, वी नो ऑफ अ बिल्डर, राइट, जो बहुत बड़ा बिल्डर था नोएडा का। सतीश यू वुड आल्सो नो, मतलब एवरीबॉडी मस्ट हैव हर्ड, तो NBCC को काम दिया गया कि भैया आप कंप्लीट कर दो ये प्रोजेक्ट्स। तो उसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा सर, ये समझना कि भाई इसका मेरा इम्पैक्ट क्या ऑडिट के अंदर, क्योंकि अगर बिल्डर भाग ही गया, कंस्ट्रक्शन ही पूरी नहीं हुई, तो उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू बची है? क्योंकि हो सकता है बैंक तो उसको फुल्ली सिक्योर्ड दिखा रहा हो, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, क्योंकि फिर तो उसका क्या राइट रह गया प्रॉपर्टी में, जो इनडिविजिबल राइट है इन दी अंडरनीथ लैंड, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो आप कह सकते हो। तो ये इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है हाउसिंग लोन में, जो जनरली हम मान के चलते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड एडवांस। तो स्पेशली यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज है, वहां पे प्लीज बी वेरी केयरफुल। और अगर वो इशू एक बंदे के केस में होगा, एक आपको केस मिलता है, तो उस बिल्डर के साथ जितने केसेस होंगे किसी और बोर्डोर के होंगे, तो वो भी आप निकालोगे तो सब में सेम इशू है। तो अगर एक अकाउंट भी आप ऐसा पकड़ते हो तो हो सकता है कि आपकी ब्रांच में ऐसे 20-25 केसेस और मिल जाए आपको। तो
कई बार इसका मटेरियल इम्पैक्ट भी आ जाता है अपने ऑडिट के ऊपर काफी। सर इसमें जब इतनी बात चली है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो जब LSR लीगल स्क्रूटनी रिपोर्ट हम जब चेक करते हैं तो उसमें एडवोकेट साहब एक लाइन लिखते हैं, वेदर सरफासी एक्ट इज एप्लीकेबल ऑन दिस प्रॉपर्टी और नॉट। वो क्या उसका मतलब क्यों एप्लीकेबल नहीं होता कुछ किस एरिया में, और क्या सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है तो दे सकते हैं ब्रांच लोन बैंक्स? सर देखिए, लोन देने पे कहीं पे ना कोई लिमिटेशन नहीं है। जब पहले सरफासी नहीं आया था, जब भी तब भी लोन्स दे होते सकते ही थे, हैं। हाँ तो जी। अगर बैंक की पॉलिसी है ऐसी कोई, तो बैंक तो अनसिक्योर्ड भी दे सकता है, यस। उसको सिक्योरिटी की भी जरूरत नहीं है। आई रिमेम्बर आई सॉ केस, एक कंपनी थी ONGC की, 100% ओन सब्सिडरी थी। उसको बैंक ने लोन दिया, उन्होंने कुछ करीबन, आई थिंक व्हाट आई रिमेम्बर इट इज मेनी इयर्स बैक, बट देयर वाज अ फिगर ऑफ अराउंड 1200 करोड़ उन्होंने लोन उठाया। तो ONGC की सब्सिडरी बता रहे हैं? हाँ, तो ओके। उन्होंने क्या किया, 1200 करोड़ का लोन उठाया। तो उन्होंने बैंकों को लेटर भेजा कि भाई हमें 1200 करोड़ की जरूरत है, आप अपनी ऑफर भेजिए कि आप किस रेट पे करेंगे, एंड इट वाज अनसिक्योर्ड एडवांस। ठीक है। हिमाचल का केस था सर? नहीं नहीं, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आई एम गिविंग जस्ट एन एग्जांपल। ओके। तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि ये वहां पे 6 बैंक पहुंच गए, और एवरीबडी वांटेड अ पाई कि भाई मेरे को दे दो, आप मेरे को दे दो। उन्होंने कहा सर जी 6 में डिवाइड कर दो, हर एक को 200 करोड़ दे दो, कि भाई तू 200 ले ले, तू भी 200 ले ले, तू भी 200 ले ले। और जो उन्होंने लोएस्ट रेट उनको मिला था, वो उन्होंने पकड़ के सबको कह दिया जी इस रेट पे हम लेंगे आपसे, और 200 करोड़। और डॉक्यूमेंट के नाम पे सर देयर वाज ओनली वन प्रॉमिसरी नोट which they have signed. They have not given any other document to the यस। bank. यस। तो बैंक हैज द डिस्क्रिशन, बैंक को लगता है कि भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो दे कैन गिव, देयर इज नो इशू। ठीक है। सो ऐसा नहीं है, सरफेसाई में नहीं है, बट इट क्रिएट्स अ रिस्क कि भाई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सिक्योरिटी माइट बी अ प्रॉब्लम। अब क्या रीजंस हो सकते हैं सर? एक रीजन तो मैं ही आपको बताऊं सबसे बड़ा, विच समटाइम्स वी इग्नोर, इसकी अगर सरसाई में चार्ज क्रिएट नहीं हुआ सर, राइट? तो सरसाई जब इनिशियली आया था, इट वाज ओनली फॉर इक्विटेबल मॉर्गेज, देन इट वाज एक्सटेंडेड टू, आज की डेट में जो पोजीशन है उसकी ये है कि जी इक्विटेबल मॉर्गेज और रजिस्टर्ड मॉर्गेज, आपके कोई भी मूवेबल एसेट्स हो, इमूवेबल एसेट्स हो, आपका इवन इनटेंजिबल एसेट्स हो, इवन प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन जैसे बिल्डर प्रॉपर्टीज हो गई, इन सब के लिए सरसाई का चार्ज क्रिएट करना है। और सरफसाई के लॉ में सर करीबन 2 साल पहले एक अमेंडमेंट आई, उन्होंने क्या कहा सर कि इफ अ चार्ज इज नॉट क्रिएटेड अंडर सरसाई, जो मैंडेटरीली रिक्वायर्ड है, जैसे हमने जो भी एग्जांपल में डिस्कस किया, तो दी राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ दैट राइट थ्रू सरफेसाई इटसेल्फ वुड बी डिफिकल्ट, राइट? So this can be one example. There can be multiple other examples of these things. तो ये चीज बड़ी कई बार क्रिटिकल हो जाती है कि भाई मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पाऊंगा, यूज नहीं कर पाऊंगा, तो फिर मैं एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस में चला गया, जिसको अवॉइड करने के लिए ही सरफेसाई को लेके आया जाता है, सो दैट दे आर एबल टू इन्फोर्स सिक्योरिटीज ऑन अ वेरी रैपिड पेस, and which has been quite successful also as far as banks goes. They have been successfully able to do it. So there can be so पर multiple जो of such. एडवोकेट लेवल पे जब लिख के आती है लाइन, दिस सरफेसी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस लैंड, वो क्या मतलब कुछ लोकेशन वाइज है या नहीं कुछ सर, मतलब सर उसके एरिया? अंदर जितना मैं समझता हूँ, मेरी भी लीगल नॉलेज एज फार एज दैट एरिया इज नॉट at the level of maybe an advocate who may be या only practicing that area, पर जो मैं समझता हूँ उसके अंदर कि कई ऐसी लैंड्स हैं जिसके ऊपर सरफेसाई लग ही नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, तो जो मुझे पता है कि मेरे ख्याल से एग्रीकल्चर के अंदर सरफेसाई का नोटिस नहीं जाता, उसका जो इन्फोर्समेंट होती है वो अलग तरीके से होती है। पटवारी के लेकिन थ्रू होते हो तो हाँ, तो वो रिकवरी पटवारी के एक्ट में? थ्रू होती है। तो इस तरह की कोई इश्यूज की वो जरूर ओके। मतलब once we go through the complete act, we maybe we will be able to understand it. राइट। वो इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। ओके। ओके, लास्ट जो हम सर्टिफिकेशंस की बात कर रहे थे, घोषण जिलानी एक और आता है। तो घोषण जिलानी में कई बार मैंने देखा है कि लोग जब मैं उन लोगों से कभी पूछता हूँ कि भाई इसके अंदर क्या था, घोषण जिलानी में क्या चेक किया था, तो लॉट ऑफ टाइम पीपल ओनली गिव अ स्माइल एंड देन मूव ऑन, कि इट गिव्स एन इंप्रेशन दैट समटाइम्स वी इग्नोर
द क्वेश्चन जिलानी कमेटी रिपोर्ट। तो इसमें सर एक पॉइंट आता है विच आई यूजुअली ट्राई एंड टेल पीपल इज, जैसे कि आता है इसमें बीजी एलसी टू बी इशूड इन सिक्योरिटी फॉर्म सीरियली नंबर। व्हाट इज दिस इशू ऑल अबाउट? तो आज की डेट में क्या ये रेलिवेंट गाइडलाइन है? यस, इट इज रेलिवेंट। सो इफ यू लुक एट द मास्टर सर्कुलर ऑफ गारंटीज एंड कोएक्सेप्टेंसेस, इट टॉक्स अबाउट द सेम इशू इवन टुडे। सो इट इज अ रेलिवेंट गाइडलाइन। व्हाट इट इज सेइंग बेसिकली इज दैट आपको जैसे एफडी की एक प्री प्रिंटेड स्टेशनरी होती है, प्री नंबर्ड, ऐसी स्टेशनरी बीजी और एलसी के लिए भी लानी है और उसी के ऊपर इनको प्रिंट करना है। ठीक है। जबकि जनरली आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स में देखेंगे जो एलसी, तो खैर आज की डेट में कोई इशू नहीं होती फिजिकली, इट इज इशूड थ्रू एसएफएमएस और स्विफ्ट। स्विफ्ट इज MT700 करके एक मैसेज टाइप होता है। और एक है, अगर इलनेड लेटर ऑफ क्रेडिट है, लोकल है, तो उसका एक मैसेजिंग टाइप है एसएफएमएस, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम, उसके थ्रू इशू होती है। तो देयर इज नो इशुएंस ऑफ एलसीज फिजिकली। बीजी हाउएवर इज गेटिंग इशूड फिजिकली इन अ लॉट ऑफ केसेस, और उसका मैसेज कई बार एसएफएमएस के थ्रू भी भेजते हैं बैंक्स, बट इट इज नॉट मैंडेटरी एज ऑफ नाउ। तो बीजी के अंदर क्या है सर कि बीजी के अंदर अगेन द इशू रिमेन्स द सेम, कि बैंक्स इशू कर रहे हैं उसको जनरली स्टैम्प पेपर्स पे, स्टैम्प पेपर से प्रिंट करते हैं, उसको साइन करके दे। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, क्या रिस्क है सर? So there was a fraud which got committed against one of the banks. एक बिहार की ब्रांच में क्या हुआ सर कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास बहुत सारे रिक्वायरमेंट रहती थी बीजीज की। तो उसकी ब्रांच मैनेजर दोस्ती हो गई, उसने कहा कि भाई यार मेरे पास तो इतने पैसे होते नहीं कि आपको 100% मार्जिन मांगते हो, फिर आपको इतने चार्जेस भी हैं, ये भी है वो भी है, तो कुछ हेल्प कर। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा करा करो कि आप बीजीज को प्रिंट करके ले आया करो ऑन दी स्टैम्प पेपर, आई विल साइन एंड गिव इट टू यू। ठीक है। नाउ दिस इशुएंस ऑफ बीजीज इज विद इन दी purported authority of that branch, इट इज नॉट बियॉन्ड इट्स कॉम्पिटेंस, पर उसकी सिस्टम में कोई एंट्री नहीं होगी। तो क्या बैंक वुड बी एबल टू डिनाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिनाई द लायबिलिटी टुवर्ड्स दैट बीजी? व्हाट डू यू थिंक सर? क्योंकि ये स्कैम जो है बिल्कुल सिमिलर है टू दी नीरव मोदी स्कैम। नीरव मोदी में भी एक तरह की बीजी ही थी, जिसको हम एलओसी या एलयूटी कहते थे, विच वर इशूड थ्रू स्विफ्ट। यहाँ पे फिजिकल इशू होती है बीजीज। तो क्या बैंक अपनी लायबिलिटी डिनाई कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। पर इसकी आप चेकिंग कैसे करेंगे एज एन ऑडिट? यानी आपकी बैलेंस शीट ओरिएंटल, को मुझे डायरेक्टली ऐसे याद इंपैक्ट आ रहा है, करेगा। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का एक सिस्टम था। हम्म, उनको अपने रीजनल ऑफिस से परमिशन लेके एक पर्टिकुलर नंबर्ड वाले लेटर पे भेजी जाती थी, वेरी उसके गुड बाद सर। वो स्टैम्प पेपर के साथ होता था। लेकिन मैंने और कहीं, मेरे को नहीं मिला सर ये या प्राइवेट ध्यान नहीं बैंक्स में दिया। फॉलो हो रहा है, जैसे अगर आप आईसीआईसीआई की बीजी देखें या एचडीएफसी की बीजी जो प्रिंट हो रही है वो देखेंगे, तो वो इसी तरह की सीरियली नंबर्ड स्टैम्प पेपर, सीरियली नंबर्ड स्टेशनरी पे प्रिंट। ओके। उस पे होती सो है। हाँ, तो आई थिंक ये जो इशू है ना सर, इसको कंट्रोल करने के लिए ये दिस गाइडलाइंस एग्जिस्ट। एंड दिस इज, इट इज नॉट दैट कि ऐसा कभी हुआ होगा, आज नहीं होता वाला नहीं है सर। Very recently, only something like 6 months back, somebody has forwarded me a FIR filed by one of the persons against the branch, some public sector bank branch manager. वहां पे भी exactly same issue allege हो रहा है कि कोई बीजी इशू हुई और वो उसके बेसिस पे कोई एडवांस दिया गया किसी को। ठीक है। और जब वो उसने अपना काम नहीं किया तो उसने बीजी इन्वोक करी और उस बैंक को भेजा कि भाई ये मेरी बीजी की पेमेंट कर दो। तो नाउ द बैंक इज सेइंग देयर इज नो एंट्री ऑफ सच बीजी इन आवर बुक्स ऑफ, and he is saying that I have the evidence in form of the confirmation from the branch manager. There is an email from the branch managers जो उनका बैंक के सर्वर से जो आई है, जनरेट हुई है, ओरिजिनेट हुई है, जिसमें उसने लिखा है कि आई हैव इशूड दिस बीजी। तो आप समझे कि आज की डेट में भी देयर इज अ रिस्क फॉर अस एज एन ऑडिटर कि इस तरह का कोई इशू हो सकता है। ऑफ कोर्स एज एन ऑडिटर हम के पास कोई चेक्स नहीं है, ऐसा कोई उसने कर रखा है तो, बट ये प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हो रहा और फिर भी हम येस करके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपना काम पूरा नहीं कर सर कौन सा, अगर इफ यू कैन नेम, कौन सा ऐसा बैंक है जो ये प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहा? रहे। मुझे तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आज की डेट में कोई भी बैंक नजर नहीं आ रहा तो ये प्रोसेस फॉलो हो। मेरे को भी सिर्फ ओबीसी नजर आता था पहले, तो और कोई नजर नहीं आ रहा। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है सर।
which I think we need to take care while we are doing the report. ठीक है, और इसकी सर एक है ना एक फॉर्मेट भी है, अगर हम अपना गाइडेंस नोट और ऑडिट ऑफ बैंक्स देखें तो वो कहता है कि जब आप बोझ जलानी की रिपोर्ट इशू कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट को आप उसको ऊपर रखिए और फिर बोझ जलानी कमेटी की रिपोर्ट एज एन एक्शन आएगी उसकी, और उसके अंदर आप मेंशन करिए जहां जहां पे आप डिसएग्री कर रहे हैं विद अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन, यू कैन गिव एक्सप्लेनेशन आल्सो सो क्या रीजन है क्यों आप डिसएग्री कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तो यस नो नॉट एप्लीकेबल की ऑप्शन देते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके, नहीं अब फटाफट कर लेते हैं, हाउ मच टाइम वी हैव प्रसिद्धि जी? 1 घंटा तो है ही सर अभी। So what we'll do is that maybe we can continue for another half an hour and then open it for question and answer. Okay. श्योर सर। एक रिपोर्टिंग की बात करते हैं सर, तो आई थिंक वेरी क्रिटिकल इज दैट वी डू एन ऑडिट, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमसे साइन भी करवाए जाते हैं, बट एक ही चीज है जो हमसे साइन करवाने से पहले हमें ही प्रिपेयर करनी है, और सारी चीजें हमसे प्रिपेयर हमें मिलती है, हमें चेक करनी है और साइन करनी है, ठीक है, विच इज दी ऑडिट रिपोर्ट। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम ऑडिट रिपोर्ट में ही सबसे कम टाइम लगाते हैं, which is the actually the final product of our effort for the last 2 days, 3, 4, 5, 6, जितना भी आपने टाइम लगा, ठीक है। तो I think this is very critical that we actually devote time on our audit report. Understand in case there are any issues, it might have to be reflected in our audit report. Even the LFAR का आप guiding principles देखेंगे जो RBI ने दी, तो उन्होंने एक चीज बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की, वो हमारे को जरूरत नहीं होनी थी रिमाइंड करवाने की, बट फिर भी आरबीआई ने पॉइंट आउट की, उन्होंने कहा इफ देयर इज एनी एडवर्स कमेंट इन एलएफएआर the auditors have to see whether adverse comment is required in the statutory audit report also. और उन्होंने ये भी कहा कि every adverse comment in the LFAR does not mean a comment in the main statutory audit report, but of course you should be aware, so they are not substitute of each other. ये नहीं कि मेरा कोई एमओसी बन रहा था मैंने एलएफएआर में लिख दिया तो मेरा काम हो गया, सो दे आर नॉट सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर। आप लेदर एलएफएआर में स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट का रेफरेंस दे सकते हैं, but that it cannot be the other way around. You cannot give in the main statutory audit report the reference of the LFA. Okay, so it is very very critical sir कि हम ये चीज को तरीके से चेक करें। We should be aware of the basically those SA 700 705 they are the most critical for reporting. Then key audit findings भी हैं, you can report on key audit findings भी हैं, so these are some of the important things which we have to keep in mind. Okay, सर्टिफिकेट्स की बात करते हैं सर। एक तो एक्सपोर्ट के ऊपर सर्टिफिकेट है, इसके लिए सर लास्ट ईयर एक सर्कुलर आया और मार्च 8 2022 को, और एक सर्कुलर इस साल आया है सर विच हैज अपडेटेड दीज गाइडलाइंस। इन्होंने सर्कुलर में क्या कहा बेसिकली प्लीज अंडरस्टैंड करिएगा। एक तो उन्होंने 5% इंटरेस्ट सबवेंशन होता था फॉर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स, वो उन्होंने 3% कर दिया फॉर एमएसएमई मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर्स, और अगर कोई एमएसएमई ट्रेडर एक्सपोर्टर है तो उसको 3% भी नहीं मिलेगा, उसे 2% ही मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा इन्होंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज क्या लेके आया कि अगर कोई कस्टमर पीएलआई स्कीम का बेनिफिट ले रहा है, तो पीएलआई स्कीम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर वो एक्सपोर्ट करता है इसको प्रोडक्ट को जिसमें उसने पीएलआई लिया, तो उस केस में उसको कोई इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर उसमें एक प्रॉब्लम आ रही, उन्होंने क्या कहा था कि जी भाई हम उसको बेनिफिट नहीं देंगे, तो प्रॉब्लम क्या आई, से अ कंपनी लाइक सैमसंग, दे आर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल्स, दे आर गेटिंग अ पीएलआई फॉर इट। उन्होंने मोबाइल एक्सपोर्ट करे, आप उसको एक्सपोर्ट इंसेंटिव नहीं देना चाहते, वेल एंड, बट सपोज उन्होंने कुछ टीवी, कोई एसी, कोई फ्रिज, इस तरह की आइटम जो व्हाइट गुड्स है उनको एक्सपोर्ट किया जिसमें उन्होंने पीएलआई क्लेम ही नहीं किया, तो उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उन केसेस में आपको इंटरेस्ट सबवेंशन का बेनिफिट मिल सकता, ठीक है। तो एंड ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच वी हैव बीन टेलिंग एवरीबॉडी, तो उन्होंने फिर से सर्कुलर में स्पेसिफिकली लिख दिया क्रेडिट ऑफ अकाउंट ऑफ एक्सपोर्टर इज मैंडेटरी बिफोर रेजिंग अ क्लेम। ओके, एक इंटरेस्ट सबवेंशन आता है सर क्रॉप के लिए। अब इसमें दो तरह के आते हैं सर एग्रीकल्चर के अंदर, ये हम में से किसी को भी एग्रीकल्चर ब्रांच मिलती है तो मुझे लगता है कि
सब लोग काफी परेशान रहते हैं उस इशू को लेकर। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एटलीस्ट नॉलेज वाइज तो मैं आपकी हेल्प करूँ। ऑफ कोर्स जो लिमिटेशंस हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो मतलब नोबडी कैन डू मच अबाउट इट। ठीक है, तो इसमें एक सर्कुलर आया सर नया इसमें, तो उसमें बेसिकली एक्सटेंशन किया 22-23 फाइनेंशियल ईयर और 23-24 के लिए स्कीम को। और बेसिकली उन्होंने क्या किया है इसमें, एक तो चेंज उन्होंने ये किया कि इसमें दो तरह का इंटरेस्ट सबमिशन होता है, 2% का और 3% का। 2% को उन्होंने रिड्यूस कर दिया 1.5%। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पूरे साल में 1.5 ही लगे। ठीक है, उन्होंने अब ये स्कीम क्या बात करता है, कहता है शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 lakhs पर फार्मर इफ प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 7%। सिंपल है। ठीक है, शॉर्ट टर्म क्रॉप लोन अप टू 3 lakhs पर फार्मर। तो अगर 10 लाख का लोन है फार्मर का तो मिलेगा या नहीं मिलेगा? एनीबडी? हाँ जी, मिलेगा 3 लाख तक की लिमिट तक, ऊपर से नहीं यस। मिलेगा। तो 3 लाख तक मिलेगा, उसके ऊपर नहीं मिलेगा। तो इवन आप अगर देखेंगे ना, तो बैंक्स भी क्या करते हैं कि 3 लाख तक आपको 7% पे इंटरेस्ट पे फाइनेंस करते हैं बैंक फार्मर्स को, और उसके ऊपर जो होता है उसके ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो देर इज अ टायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, क्यों करते हैं 7% अप टू 3 lakhs? बिकॉज देर इज अ इंटरेस्ट मेंशन ऑफ 2% था अर्लियर और 1.5%। तो इसका मतलब ये हुआ सर 7% इज द रेट ऑफर्ड बाय द बैंक, 1.5% is the interest subvention. So the net rate to the farmer is 7 minus 1.5, 5.5%. Is it right? Banks get from RBI that Right, 1.5% or 3% for that matter, और right, बोरा से वो 7% चार्ज कर रहे हैं, तो बैंक के लिए 8.5 हो गया ना। right. So basically ये important है जो सतीश जी ने और निधि जी लिख के भेज रहे हैं मेरे को। तो basically very important, this benefit of interest subvention of 1.5% is not given to the borrower. It is meant for the bank. ठीक है, इट इज इनकम ऑफ द बैंक। तो बैंक इज फाइनेंसिंग एट 7%, दे गेट एन एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट थ्रू आरबीआई। सो देयर basically interest the income becomes 7% from the borrower, 1.5% from the government as interest subvention, 8.5%. Okay, so benefit of this interest subvention is not passed on to the borrower. दूसरा आता है सर 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन। दिस इज फॉर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट। प्रॉम्प्ट रीपेमेंट मींस देयर इज अ ड्यू डेट, अप टू द ड्यू डेट इफ यू डू the complete payment, repayment happens completely by the due date, it is considered as prompt repayment। 3% का है, so if you do a prompt repayment 3% का additional interest subvention मिलता है। So 7 minus 3, 4% would be net rate to the farmer if he promptly repays. Okay, so kind of an incentive. Interest subvention जो मिलता है from the date of disbursement till the actual date of repayment or the due date fixed by the bank, whichever is earlier, subject to a maximum period of 1 year. ठीक है, और एक 6 months का एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है वेयर हाउस रिसिप्ट्स के केस में। ठीक है, और इसके अंदर दो चीजें और आपको याद रखनी है। तो आधार लिंकेज हैज बीन मेड मैंडेटरी, विदाउट आधार बीइंग लिंक्ड टू अकाउंट यू कैन नॉट क्लेम एनी इंटरेस्ट सबवेंशन। ठीक है, और दूसरा इसमें है केसीसी हैज बीन मेड मैंडेटरी। यानी आप केसीसी के थ्रू एग्रीकल्चर लोन दिया है तो ही आपको इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, नहीं तो नहीं। लास्ट पॉइंट, इंटरेस्ट सबवेंशन आपको दो तरह के केसीसी हैं एक बैंक के केस में। एक है केसीसी फॉर क्रॉप लोन, दूसरा है केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, बी कीपिंग वगैरह के लिए। दोनों केसीसी सर अलग अलग हैं, दोनों से कंफ्यूज मत होइएगा। केसीसी फॉर क्रॉप लोन और केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री दोनों अलग हैं, दोनों की गाइडलाइंस अलग है, रीपेमेंट शेड्यूल अलग है, इवन दी एनपीए नॉर्म्स आर सेपरेट। क्रॉप लोन के केस में, केसीसी और क्रॉप लोन के केस में कुछ क्रॉप सीजन का फंडा लगता है जो हम समझेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री में नॉर्मल 90 days नॉर्म। सो दिस इज वेरी क्रिटिकल।
दोनों पे इंटरेस्ट सबमिशन मिल रहा है, ठीक है। जो आपने केस प्रॉम्प्ट पेमेंट का बताया सर, प्रॉम्प्ट पेमेंट के केसेस में जो पलटा जो ये करते हैं, वो पलटा बेसिकली बैंकर्स करते तो एनपीए बचाने के लिए, पर क्या ये पलटा करने की वजह से प्रॉम्प्ट रीपेमेंट काउंट होगी? सर अगर आप उसको रीपेमेंट मान रहे हैं, अदरवाइज तो काउंट होगी। तो वो प्रॉम्प्ट रीपेमेंट भी हो जाएगी, ओके। isn't it? तो आप ये नहीं कह सकते ना मैं इसको एनपीए नॉर्म्स के लिए तो रीपेमेंट मान रहा हूँ, पर मतलब फॉर इंटरेस्ट सबमिशन एक्चुअली तो उसको कोई रीपेमेंट। ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री ब्रांच में सर होती है। ये तो आप प्रूफ का अगर कर सकते हो तो दोनों से हटा सकते हो। प्रॉब्लम क्या किया हुआ है है, कि हमने तो अगर, किया है। हाँ, अगर हमने आप तो कर किया सकते है, हैं, कभी कभी एक दो ब्रांचेस में हमने किया है। सर उसका हम यही कहते हैं कि आप वाउचर चेक करिए सर, इफ यू आर वॉचर्स के, एबल टू, through vouchers you are able to somehow bring something on record saying that this is not an actual repayment, this is only dummy book entry, then neither it is a repayment for the purpose of NPA nor it is a repayment for the purpose of interest subvention. वो उसमें एक वहां एक लिमिटेशन आ जाती है कि जो पलटा करते समय रिसीट अमाउंट ज्यादा है और विड्रॉ अमाउंट कम है, तो वो एक्चुअली माननी पड़ती है। वही एक्चुअल जाती है क्योंकि उस केस में बोरो को इन्वॉल्वमेंट है ये नहीं है हमारी कोई बात लड़ाई, नहीं, लेकिन वो करना ही है उसे। हाँ, लेकिन जहां रीपेमेंट और विड्रॉल दोनों सेम है, वहां और अगर साइन नहीं है वाउचर पे साथ में विड्रॉल वाले पे, तो वो प्रूव हो जाता है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्या है कि केसीसी दोनों में मिल रहा है, एनिमल हस्बेंड्री में अप टू 2 लाख पर फार्मर मिल रहा है, क्रॉप लोन में अप टू 3 लाख पर फार्मर मिल रहा है, पर इसका मतलब 3 + 2 5 नहीं है, द ओवरऑल लिमिट इज 3 लाख। ओके। और इन्होंने कहा कि जी सपोज कीजिए कोई फार्मर है, उसका केसीसी फॉर क्रॉप लोन 2.5 लाख का है और केसीसी फॉर एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज 1.5 का है, तो किसको पहली प्रेफरेंस मिलेगी? तो उन्होंने कहा जी पहले क्रॉप लोन को मिलेगी, तो 2.5 क्रॉप पे मिलेगा और 0.5 आपका सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री पे मिलेगा। और लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि प्रॉम्प्ट रीपेमेंट in such cases would mean that both the KCC are promptly repaid. ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक को रिपे कर दिया प्रॉम्प्टली तो उस पे मिल गया और दूसरे पे ना मिले, both are to be repaid timely, पर promptly. ये चेकिंग में तो गलती रही जाती होगी। सर इसकी तो पहले तो आपको वर्कशीट लेनी है, अगेन विदाउट टेकिंग वर्कशीट यू विल नॉट बी एबल टू डू इट। और हम क्या करते हैं सर, वर्कशीट को लेते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। एक तो बड़ा इजी है, वी लुकअप लगाते हैं, एनी अकाउंट व्हिच इज अपीयरिंग इन द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% एंड व्हिच में बी अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ एनपीएस और अपीयरिंग इन द लिस्ट ऑफ एसएमए, उनको मिलना ही नहीं है। क्योंकि दोनों हो ही नहीं सकता, कोई भी केस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एनपीए या एसएमए में अपीयर कर रहा है तो उसने यानी प्रॉम्प्टली रीपे नहीं किया, और अगर प्रॉम्प्टली रीपे नहीं किया तो उसको 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन नहीं। और जो ब्रांच के हिसाब से तो स्टैंडर्ड है, पर हम लोगों ने जाके उसे एनपी डिक्लेयर किया तब उसे प्रॉम्प्ट रीपेमेंट नहीं करा तो 3% का नहीं मिलेगा। नहीं, ब्रांच के हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। कैसे कहेगा ठीक है? अच्छा ठीक होगा नहीं, क्योंकि प्रॉम्प्ट नहीं होगा तभी एनपीए हम कर पाएंगे। बिल्कुल। ओके, ये ईसीएलजीएस स्कीम मैंने आपको बताई थी सर। तो ईसीएलजीएस स्कीम के अंदर क्या आया है कि सपोज ये अकाउंट एनपीए होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि 1 साल का इसमें जनरली मॉरेटोरियम पीरियड था, तो इनमें क्या, इंक्लूडिंग 1 ईयर मोरेटोरियम, मेन तो हाँ फर्स्ट स्कीम तो ये थी। हाँ जी, उसके बाद काफी सारी स्कीमें आ गई हैं सर। अब ईसीएलजीएस 1.5 के बाद 1.5 एक्सटेंशन आई, फिर 2 आई, फिर 2.5 एक्सटेंशन आई, फिर 3, आज की डेट में 5 तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो पर इम्पोर्टेंट इज क्योंकि वो गाइडलाइंस हम करने लगे हैं तो पूरा एक दिन हमें सिर्फ ईसीएलजी स्कीम की गाइडलाइन समझने में लगेगा। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है और क्यों ये मिस आउट हो रहा है, क्योंकि मैंने काफी सेमिनार्स अटेंड करे हैं, तो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दिस स्कीम एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि इसलिए शायद मिस आउट हो रहा है क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइंस का पार्ट नहीं है।
तो फॉर दैट यू विल हैव टू गो टू अ डिफरेंट सेट ऑफ गाइडलाइंस एंड अंडरस्टैंड कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसके अंदर क्या है सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अब ये अकाउंट एनपीए हो रहे होंगे, आपकी ब्रांच में भी हो सकता है कोई एनपीओ। इसमें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस स्कीम में क्या था कि आपकी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी जो भी है उसका 30% उन्हें इनिशियली दिया था एज अ वर्किंग कैपिटल टर्म लोन फैसिलिटी, और उन्होंने कहा था जो सिक्योरिटी आपने इन लोन पे ले रखी है जिसका 30% हम दे रहे हैं उस पर एक सेकेंड चार्ज क्रिएट होगा फॉर द ईसीएलजीएस फैसिलिटी, and this facility is 100% guaranteed by the guarantee of NCGTC, which is a government body. और बेसल 3 के लिए उन्होंने कहा इसका रिस्क वेट 0 है, मतलब इसकी आपको कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन नहीं। ओके, अब बहुत सी केसेस में क्या हुआ, सेकंड चार्ज क्रिएट ही नहीं किया बैंक, तो उन्होंने डेट एक्सटेंड भी करी। उन्होंने कहा कि अगर अकाउंट एनपी होगा और आपने सेकंड चार्ज क्रिएट नहीं किया उस डेट तक, तो दी गारंटी में बिकम वॉइड। ठीक है, जो 100% गारंटी है गवर्नमेंट की, दैट में बिकम वॉइड। दूसरा उन्होंने कहा 90 डेज के अंदर विद इन द अकाउंट बिकमिंग एनपीए आपको इन्फॉर्म करना है ऑनलाइन टू एनसीजीटीसी, देयर इज एन ऑनलाइन सिस्टम थ्रू व्हिच यू हैव टू रिपोर्ट। इफ यू आर नॉट सो रिपोर्टेड द गारंटी में बी कंसीडर्ड एज वॉइड। तो अगेन वो वेरी सीरियस इम्प्लीकेशन। तीसरा उन्होंने कहा सर आपने क्लेम मांगा, आपने एनपीए का इन्फॉर्म किया, तो इसमें क्या सिस्टम है, 75% दे गिव पेमेंट इमीडिएटली ऑन क्लेम एंड 25% इज रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ फाइनल सेटलमेंट। और उन्होंने 75% पे कर दिया। ठीक है, अब पे तो हो गया 75%, पर से द अकाउंट गॉट अपग्रेडेड बैक टू द स्टैंडर्ड कैटेगरी। तो इस एडवांस का क्या करें जो आ गया 75% क्लेम का पैसा, इसका क्या करें? ये तो एडजस्ट ही होगा उस अकाउंट से? नहीं सर, रिवर्स होने, रिटर्न करने, ये पेमेंट वापसी करनी है एनसीजीटी से। ओके, प्रोपोर्शनेटली जैसे उसमें करते थे डीआईसीजीसी में। कंप्लीट अमाउंट वापसी होगा सर, क्योंकि अकाउंट स्टैंडर्ड हो गया। ओके, ठीक है, और दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा सर कि क्योंकि आपने गारंटी इनवोक कर ली एनसीजीटीसी की, चाहे पार्शियल अमाउंट के लिए हुई या फुल अमाउंट के लिए हुई, even if you now return the money, then also please understand उन्होंने कहा the guarantee cannot be reinstated. ओके, तो guarantee is gone forever. तो तो इसका बड़ा सीरियस इम्प्लीकेशन आने वाला ऑडिट में, which unless until you are aware of these guidelines you will not be able to चेक ही नहीं कर रहे हैं सब। इसका मतलब इसकी जो ईसीएलजीएस वाली जितनी भी स्कीम्स हैं उसकी जो क्लासिफिकेशन है, अगर वो अपने सिक्योर्ड टेंजिबल सिक्योरिटी से कवर्ड हो रही है तब तक तो सिक्योर्ड में रखना है। अदरवाइज जो बैंक गारंटी वाला जो सेकंड अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड के बीच वाला है उसमें क्लासिफाई होना चाहिए, और रीइंस्टेट नहीं हुई तो वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा। बिल्कुल सर, और क्योंकि सेकंड चार्ज है आपको पहले सिक्योरिटी का कवरेज देखना पड़ेगा फॉर द ओरिजिनल लोन्स। अब सपोज करो ओरिजिनल लोन्स की वैल्यू है सपोज करो 100 रुपए और आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है 110 रुपए, तो 100 माइनस करने के बाद सिर्फ 10 रुपए पड़े आपके पास, और आपका ईसीएलजीएस का लोन है 30 रुपए का सपोज, तो आपकी 20 रुपए अनसिक्योर्ड चल रहे हैं। ठीक है, और गारंटी हटने के बाद तो आपको जो स्टेटस है चेंज हो जाएगा, तो 20 रुपए अनसिक्योर्ड में दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। अदरवाइज 20 रुपए आप उसमें दिखा रहे थे ईसीजीसी और गारंटी वाले। दूसरा सर इसमें क्योंकि आपकी गारंटी खत्म हो गई, तो बेसल नॉर्म्स के अंदर जो आपकी क्लासिफिकेशन है ऑफ दीज अकाउंट्स, इट विल चेंज फ्रॉम 0% से सीधा वो नॉर्मल स्लैब के अंदर जाने शुरू हो जाएगा, नॉर्मल उसके अंदर। तो इसका काफी सीरियस इम्प्लीकेशन है। ये वो जो सतीश जी बता रहे थे, मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, सेक्टर वाइज क्लासिफिकेशन, सिक्योरिटी वाइज क्लासिफिकेशन, क्वालिटी वाइज क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, ओके। एनपीए के नॉर्म्स में कोई चेंज नहीं है, तो सर मैं फटाफट इसको एक बार रिवीजन की तरह चल लेते हैं। पहले टर्म लोन्स की बात करें तो उन्होंने कहा इंटरेस्ट एंड ऑल इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड मोर देन 90 days। वर्ड है मोर देन 90 days, so 91 days at least is required। तो इन्होंने कहा ड्यू डेट ऑफ लोन अकाउंट उन्होंने कहा 31 मार्च 2022। ठीक है,
full dues not received by before the lending institution runs the day end process of this day. ठीक है, तो आपने डे एंड करा बैंक ने, उस टाइम तक कंप्लीट ड्यूज रिकवर नहीं हुए थे, then the account would become overdue on 31st March 2022 itself, same day. ठीक है, तो पहले कुछ इसमें एक कह सकते हो कि मतभेद था कि अकाउंट 31st मार्च को ड्यू था, तो क्या 1 अप्रैल को ओवरड्यू होगा या 31st मार्च को? अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि ये 31st मार्च को ही हो जाएगा। अब SMA 1 में कब स्लिप करेगा, यानी मोर देन 30 डेज, तो उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल को। तो कैसे कैलकुलेट किया, 30 दिन अप्रैल के और एक दिन 31st मार्च, तो 31 डेज हो गए, तो अकाउंट 30 अप्रैल को SMA 1 में स्लिप करेगा। SMA 2 में कब करेगा, मोर देन 60 डेज, तो उन्होंने कहा कि 30 मई को, 30 दिन मई के, 30 दिन अप्रैल के 60, और एक दिन हो गया 31st मार्च, फर्स्ट डे, तो 61 डेज हो गए। एनपीए कब होगा, तो उन्होंने कहा मोर देन 90 चाहिए एनपीए के लिए, तो उन्होंने कहा 29 जून, 29 जून का मतलब 29 दिन जून के, 31 दिन मई के 60, 30 दिन अप्रैल के 90, और फर्स्ट डे इज 31st मार्च। तो इसी तरीके से आपको एनपीए क्लासिफिकेशन करनी है। ओके, देन ये कुछ उन्होंने कहा चीजें मेंशन होनी चाहिए किसी भी लोन एग्रीमेंट में, एग्जैक्ट ड्यू डेट फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रीपेमेंट, ब्रेकअप बिटवीन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एग्जांपल्स ऑफ SMA NPA क्लासिफिकेशन विद डेट्स, इन केस ऑफ मॉरिटोरियम एग्जैक्ट डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ रीपेमेंट। तो ये सब चीजें आप जरूर चेक कर लीजिए कि मेंशन है या नहीं है, नहीं है तो आपके LFAR में अप्रोप्रिएटली। आउट ऑफ ऑर्डर कैश क्रेडिट, एक तो उन्होंने क्लैरिफाई किया सर, आपने ओवरड्राफ्ट बिजनेस पर्पस के लिए लिया, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए लिया, कोई फर्क नहीं है, दोनों के ऊपर आउट ऑफ ऑर्डर कंसेप्ट लगता है। ठीक है, और आउट ऑफ ऑर्डर में क्या कहा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर फॉर 90 डेज, यहाँ पे मोर देन नहीं है, फॉर 90 डेज है, तो ये बड़ा क्रिटिकल है। दूसरा इन्होंने कहा द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द CCOD अकाउंट इज लेस देन द सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर, बट देयर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज, और क्रेडिट्स आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द प्रीवियस 90 डेज। तो ये दोनों आपको जरूर चेक करने हैं। ठीक है, तो इसमें मेन जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ड्राइंग पावर की। क्रेडिट्स के लिए मैंने क्या देखा सर, लास्ट ईयर भी देखा कि सेम अकाउंट CC अकाउंट डेबिटेड, सेम CC अकाउंट क्रेडिटेड टू जनरेट क्रेडिट्स, तो वो इस तरह की भी माल प्रैक्टिस इसको जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऐसा तो नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर, एंड देन मे बी विल कॉल इट अ ब्रेक फॉर द क्वेश्चन आंसर। एग्रीकल्चर में सबसे पहला इशू क्या आता है सर, जब हम ब्रांच पे पहुंचते हैं तो एक रूरल ब्रांच है, सेमी अर्बन ब्रांच है, तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि भाई क्या ये अकाउंट में यहाँ पे बहुत सारे क्या अकाउंट हैं, KCC फॉर क्रॉप लोन है, KCC फॉर एनिमल हस्बेंड्री है, फिर कुछ गोल्ड लोन हो सकता है, कोई आपका हाउसिंग लोन हो सकते हैं, कुछ कार लोन हो सकते हैं, कोई ट्रैक्टर लोन हो सकता है, कोई रिटेल सेगमेंट का लोन हो सकता है, जैसे किसी कोई वहां पे शॉप चला रहा है, उसमें सामान बेच रहा है, उसकी दुकान है, कोई टेलर है उसकी दुकान है, तो किस किस को क्रॉप सीजन का फंडा लगना है और किसको नॉर्मल 90 डेज का। तो सबसे पहला तो डाउट हमारे दिमाग में ये आता है, तो इसके लिए सर एनेक्चर 2 टू द मास्टर सर्कुलर 1 अप्रैल 2022 इट टेल्स यू किस किस अकाउंट के ऊपर आपका क्रॉप सीजन लगता है। जो एनेक्चर 2 में आते हैं उनको कहते हैं फार्म क्रेडिट्स, और फार्म क्रेडिट्स के ऊपर क्रॉप सीजन का फंडा लगता है, अगर वो उसमें कवर्ड नहीं है तो नहीं लगता। ठीक है, वो नॉर्मल 90 डेज में ऑप्शन। अब इसमें कुछ क्रॉप सीजन का फंडा है। क्रॉप सीजन क्या होता है, फ्रॉम दी टाइम आपने फसल को बोया टिल दी टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग, इसको कहते हैं क्रॉप सीजन। ठीक है, अब मुझे तो पता नहीं क्रॉप सीजन क्या होता है, किस स्टेट में कौन सा होता है, ये कौन सी फसल कब उगाई जाती है, तो उसके लिए स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी का सर्कुलर आएगा कि मेरी स्टेट में कौन कौन सी फसल होती है, कब बोई जाती है, कब हार्वेस्ट होती है, जिसको हम कह देते हैं क्रॉप सीजन, एंड व्हाट इज द स्केल ऑफ हार्वेस्ट। तो ये सर्कुलर आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो फिर इसमें दो तरह की क्रॉप्स हैं सर, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स और लॉन्ग ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स क्या होती है,
जिनका पीरियड अप टू 1 ईयर होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन होती है जिनका पीरियड 1 साल से ज्यादा। कैसे ये एक्चुअली में वर्क करती है, तो हम सबने सुना है शॉर्ट ड्यूरेशन है तो 2 क्रॉप सीजन लगेंगे, लॉन्ग ड्यूरेशन है तो 1 क्रॉप सीजन लगेगा फॉर द कंपनी। बिकॉज व्हाट वी हैव सीन इज अ लॉट ऑफ miscalculation deliberately is being done by SLBC। तो SLBC सर डिफाइन करने के लिए थी क्रॉप सीजन, एनपीए डिफाइन करने का कोई इनको पास राइट नहीं। तो दैट वी हैव टू गो एज पर द आरबीआई सर्कुलर। तो एक हमने चार्ट बनाया सर फॉर द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग दिस कि कैसे अकाउंट एनपीए बनते हैं इन केस ऑफ क्रॉप लोन। This chart is also you can download from the guidance note on audit of banks। ठीक है, क्योंकि ये वहां पे भी मेंशन है एग्जैक्टली दी सेम चार्ट। ठीक है, ओके। तो सैंक्शन डेट 1 अप्रैल 2020, 30 सितंबर 2020, 1 अक्टूबर और 31। तो 6 महीने की जनरली क्रॉप होती है, शॉर्ट टर्म क्रॉप है। हार्वेस्टिंग टाइम सितंबर मार्च, 6 महीने का पीरियड। अब रिपेमेंट ड्यू डेट जो फिक्स करता है बैंक, वो कुछ और पीरियड ऐड करके उसमें फिक्स करता है, क्योंकि हार्वेस्ट होने से क्रॉप सेल नहीं हो जाएगी, सेल होने के बाद ही रिपेमेंट होगी, तो देयर इज द एडिशनल टाइम गिवन। हमने यहाँ पे 3 मंथ्स अज्यूम किया है। बैंक्स आई हैव सीन सर्टेन केसेस गिविंग 6 मंथ्स आल्सो। सो व्हाट इज द टाइम गिवन बाय द बैंक, टेक दैट टाइम। ठीक है, उससे वो खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमने रिपेमेंट ड्यू डेट फिक्स कर दी 31 दिसंबर, 3 महीने का टाइम दे दिया, और मार्च में 3 महीने का टाइम देके 30 जून। Interest subvention is only available if the complete payment is recovered by 31st December 2020 और 30th June 2021। पेमेंट नहीं आई, डेट ऑफ इरेगुलरिटी सेम आ जाएगी, 31st December 2020, 30th June 2021। ठीक है, फर्स्ट क्रॉप सीजन एंड डेट ये देखिए सर। फर्स्ट क्रॉप सीजन का बैंड होगा सर, यहाँ पे है 2021 में 30 जून। 31 दिसंबर को उसने पेमेंट नहीं दी, अब नेक्स्ट क्रॉप का पैसा कब आएगा उसके पास, 30 जून 2020। तो फर्स्ट क्रॉप सीजन एंड हो गया, उसने पेमेंट नहीं दी। अब नेक्स्ट क्रॉप कब आएगी, 31 दिसंबर 2021। तो 6 महीने की 2 पीरियड, यानी 1 साल का पीरियड और देना। तो 9 महीने हमने इनिशियली दिए, 6 महीने के 2 पीरियड और दिए, तो 21 महीने का। अगर बैंक ने 6 महीने का लीड टाइम दिया आफ्टर हार्वेस्टिंग तो 24 महीने हो जाएंगे, पर जो वो 36 महीने और 48 महीने बना रहे हैं, इन माई हम्बल ओपिनियन इट इज नॉट द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आरबीआई। एंड द गुड थिंग इज जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज नॉट माई व्यू अलोन नाउ, इट इज नॉट द कलेक्टिव विजडम ऑफ एवरीबॉडी हु सैट एंड डिसाइडेड। तो 2 साल पहले मेरे को चैप्टर लिखने के लिए दिया गया था एग्रीकल्चर का, तो मैंने ही प्रपोज किया था ये चीज, and after a collective discussion on this point it was accepted that this is the correct interpretation of the RBI circular, and that is why it is now part of the guidance note of our institute, so you can actually look at it. Okay, now एक इसमें इशू छोटा सा और आता है कई बार सर कि जैसे मैंने एक ब्रांच पे विजिट किया, वो एग्रीकल्चर की ब्रांच ही राजस्थान में। उन्होंने कहा सर हमारे पास शॉर्ट टर्म क्रॉप तो होती है, पर साल में एक ही क्रॉप होती है, क्योंकि ये यहाँ पे ना इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, ये रेन फेड एरिया है, तो इसको हम कह देते हैं मोनोक्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, फसल एक ही हो रही है साल में बिकॉज देयर इज नो इरिगेशन, वो शॉर्ट टर्म ही रही है। तो हमने उसमें क्या करना है सर, सबसे पहले तो देखना है कि उन्होंने केसीसी की लिमिट के अंदर एक क्रॉप के लिए पैसे दिए या 2 क्रॉप। तो हमारे केस में तो 2 के लिए दिए थे, तो हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया इस बात को। अगर पर हम मान लेते हैं कि सपोज करो मोनोक्रॉपिंग ही है, लोन भी एक के लिए दिया गया है, तो क्योंकि साल में एक फसल हो रही है, तो इसमें एक्चुअली जो फर्स्ट क्रॉप सीजन एंड होगा वो 30 जून को नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देंगे तो फर्स्ट जून क्रॉप सीजन जो एंड होगा 30 जून को नहीं होगा, क्योंकि जो सेकंड फसल आ ही नहीं रही। ठीक है, तो फर्स्ट क्रॉप सीजन वुड एंड ऑन 31 दिसंबर 2021 एंड सेकंड क्रॉप सीजन वुड एंड ऑन 31 दिसंबर 2020, यानी 2 साल का पीरियड लगेगा बिफोर द अकाउंट कैन बिकम। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया है जिसमें मुझे लगता है कि लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो दिस इज हाउ वी हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन्ड as to how a calculation for NPA has to happen in case of agriculture. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू डिस्कस। ऑफ कोर्स 2 इश्यूज हमें पता ही है जो पुराने ही है, वैसे कुछ कोई खास नहीं है कि भाई
एक तो stock statement older than 6 months, account becomes an NPA. So if you're drawing in, if you're basically drawing DP from a stock statement older than 3 months, so कहते हैं इसको irregular मानेंगे. And if this irregularity continues for another 3 months, the account slips into NPA category. एक तो ये एक रिव्यू और रिन्यूअल, ये अगेन एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि अकाउंट्स को रिन्यूअल करे बिना और शॉर्ट टर्म रिव्यू कर करके 2-3 साल तक चलाया जाए, विच इज समथिंग विच इज सिंपली नॉट एक्सेप्टेबल. और 2021 में आरबीआई का सर्कुलर भी आया था इसके ऊपर, और उसमें भी उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली ये बात को लिखा कि भाई फ्रीक्वेंट एडहॉक रिन्यूअल, short-term reviews without proper document is something which is not acceptable, which is a regulatory concern. और दूसरा उन्होंने कहा कि correct capturing of data in the system is very important. क्योंकि हम कुछ केसेस में क्या देख रहे हैं सर कि एक्चुअली में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और सिस्टम में डेट चेंज करी जाती है, सो दैट कि जब ऑडिटर आके लिस्ट मांगे लास्ट रिन्यूअल डेट, तो उसको ऐसा लगेगा कि भाई रिन्यूअल अभी रिसेंटली हुआ है या 6 महीने पहले हुआ, एटलीस्ट 1 साल का पीरियड नहीं हुआ है, जबकि एक्चुअली में कोई रिन्यूअल हुआ ही नहीं है. देयर इज नो डॉक्यूमेंट, देयर इज नो प्रोसेस नोट, देयर इज नो क्रेडिट असेसमेंट व्हिच हैज बीन डन. तो ये दोनों एरियाज ऐसे हैं सर जिसके और अंदर आप मांगेंगे आपको, तो सर वो रीजनल या जोनल ऑफिस से वो एक सिंगल पेज का सैंक्शन लेटर आपको प्रोवाइड भी करा देंगे वो रिन्यू, भी एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं बिना है. दिस इज बिना समथिंग प्रोसेस व्हिच नोट के। वो एक्सेप्टेबल नहीं है. प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड, प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट आर रिक्वायर्ड, एंड देन ओनली इट कैन बी डन. ठीक है. और वो एनीथिंग जो रिन्यूअल या रिव्यू जो बोलते हैं उसको बड़ा मैनिपुलेट करके आपको कोशिश करते हैं बहकाने की या बहलाने की, पर लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो एग्जैक्ट ड्यू डेट है सैंक्शन के बाद 1 साल होता है, जो 30 दिसंबर को अगर सैंक्शन हुआ तो नेक्स्ट 30 दिसंबर को वो ड्यू फॉर रिन्यूअल हो गया. उसके बाद 6 महीने के अंदर वो 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार, जितनी मर्जी बार करने दो, बट 6 मंथ्स के बाद वो एनपीए है. पर वो 3-3 महीने का 2 स्लॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर वो पहला स्लॉट 30 जून को लेना चाहेंगे तो वो 30 जून को एंड हो गया. So it cannot in any case exceed 1 year from the date of last renewal, proper renewal, किसी भी कीमत पे. ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको जी मैं 2 साल भी चल गया और 3 साल भी चल गया और रिन्यूअल नहीं हुआ. It is not something which is not permitted at all. और वो शॉर्ट रिव्यू को भी कहते हैं, रिव्यू करा तो था सर, हमने कर दिया था, हाँ, हमने तो 1 साल के लिए हो गया. क्योंकि कहीं ना कहीं आरबीआई का सर्कुलर कुछ थोड़ा सा एम्बिग्युअसली रिटर्न है, तो they are actually misusing it, but it is something which you should put your foot down and say कि ये हम accept नहीं कर. और बोलिए सर, अब I open it for question and answer, whatever ठीक है, are so there. members now can ask your queries. You put your queries in Q&A. और अगर आपको you want you to come and speak with your video and audio, I'll allow. आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, प्लीज अलाउ, I'll allow. Any member wants to come with audio and video to raise query. आपने बहुत अच्छे से समझा दिया सर, कोई क्वेरी नहीं है. अब ये चीजों का ना सर डर क्या लगता है कि दो ही वजह से क्वेरीज नहीं होती, या तो आपने बहुत ही इतना अच्छा पढ़ा दिया कि सबकी सब कुछ आगे समझ सर, में आ आगे. गया, जिसकी चांसेस कम होते हैं. ये तो थैंक यू आया सर. और या फिर कुछ ज्यादा ही आपने हाई फाई पढ़ा दिया कि लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, तो कह रहे भाई साहब पूछे क्या, कुछ समझ में नहीं आया. आई होप इट इज नॉट द सेकंड केस. आ ही गया सर, सबको लगता है समझ. चलो ग्रेट हमें सर. प्रिज्यूम तो हम यही करेंगे. होपफुली. एंड करें सर फिर सेशन को. हाँ जी, हाँ जी. आया एक चैट बॉक्स में कुछ थैंक्स ही अनीता आया जी सर. थैंक्स यार. थैंक्स यार. चलिए सर, थैंक यू. मैंने शायद पहली बार आपको सुना है. मेरे को नहीं याद पड़ता मैंने कभी आपको सुना है. मैंने नाम आपका बहुत सुना था. लास्ट ईयर भी मैं कोशिश करता रहा, आपके समय में नहीं ले पाया. अगली बार से थोड़ा जल्दी कोशिश करूंगा आपके साथ. बिल्कुल. पर जिस तरीके से आपने एलिब्रेट करके सिर्फ
मेजर मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स या जो पिक्यूलर पॉइंट्स को हिट किया और एक्सप्लेन किया, वो बहुत अच्छा था। बैंक ऑडिट का एक्सपीरियंस काफी अच्छा है मेरे पास, और बहुत सारे इश्यूज हैं। जब आप बता रहे थे तो मेरे अंदर से क्यूरियोसिटी आ रही थी अपने एग्जाम्पल और अपने शेयरिंग करने की। मैंने फिर भी काफी सारे किए, थोड़ा सा कोशिश करके रोकता रहा, थोड़ा वॉइस भी रोक रही थी मेरे को। पर यस, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेंबर्स को तो बहुत अच्छा लगा ही। उनकी क्वेरी ड्यूरिंग द सेशन भी कोई क्वेरी नहीं है, which generally is not the case with शास्त्री और सीपी स्टडी सर्कल। हम लोग बहुत सारी क्वेरीज पूछते हैं, आज थोड़ा सा एक्सेप्शन है। उसका श्रेय सारा आपको जाता है कि आपने पहले ही ऐसे अच्छे से समझा दिया कि क्वेरीज की जरूरत नहीं पड़ी। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आई वुड ट्राई, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, रिकॉर्डिंग जरूर शेयर करेंगे। तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए बैंक ऑडिट के समय, इसको रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन सकते हैं। लोकेश जी से, अगर लोकेश जी अपना नंबर शेयर करना चाहें तो जरूर कभी भी कोई क्वेरी स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। अनम्यूट करना पड़ेगा सर। हाँ जी, मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ही है कि अगर आप व्हाट्सएप करेंगे और उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं भी अब हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे से कहीं पे बैंक ऑडिट में इन्वॉल्व होगा, तो कई बार क्या होता है कि हम इमीडिएटली है ना हर एक चीज को आंसर नहीं कर पाते। बट आई विल इंश्योर कि मैं आपका जो जिस दिन क्वेरी आएगी सेम डे मैं जरूर उस पर आपको रिप्लाई बैक करूँ। ठीक है। और उसके और अलावा एक और होता है ना सर, जब तक व्हाट्सएप पे आप थोड़ा सा स्टोरी लिख के भेजेंगे तो समझ आ जाएगी कि एक्चुअल क्वेरी क्या है, और उसका बिल्कुल उसके अप्रोप्रिएट बाद चाहे हम आंसर फोन पे भी करेंगे। बात कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा क्या होता है कि सर और कोई बात नहीं है, एक्चुअली क्या होता है आई एम पार्ट ऑफ दी WASB का एक बैंक ऑडिट FAQ करके भी एक आता है जिसपे आप क्वेरीज भेज सकते हैं। देयर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स इन देयर। आई एम ऑल्सो वन ऑफ दी एक्सपर्ट तो नहीं कहूंगा सर, बट हाँ वन ऑफ दी पर्संस एक्सपर्ट है सर। हु आर सेंड क्वेरीज टू रिप्लाई। इवन अभी जैसे मैंने फिनिश किया और मैंने खोला अपना ईमेल, तो उसके अंदर ऑलरेडी देयर आर 2 क्वेरीज व्हिच हैज कम ऑन बैंक ऑडिट, मतलब किसी ने बैंक ऑडिट FAQ पे भेजी होगी तो इट हैज कम फॉर मी टू आंसर इट। तो थोड़ा सा क्या होता है कि हम अपने ऑडिट में भी इन्वॉल्व होते हैं। कई बार लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये बताना नहीं चाहते या इनके ये तो जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा मत समझिएगा। बट वी ट्राई एंड मतलब जो भी आपकी क्वेरीज होंगी विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर ऑन द सेम डे इटसेल्फ। और चैट बॉक्स पे नंबर लिखा है, लेकिन कुछ लोगों को शायद ना नजर आ रहा हो। नंबर मैं रिपीट कर देता हूँ, 9810434904, 9810434904। So with this, I once again thanks Lokesh ji. Thank you very much, and all the participants. Thanks. हम बहुत अच्छे से ऑडिट करके आए, और सबसे खास बात जो हमारी ऑडिट जा रही है उसका मैसेज ये कन्वे, जैसे लोकेश जी ने भी बताया, कि हम एंड रिजल्ट कुछ नहीं है। मैं अपने स्टाफ को, जो आर्टिकल्स या जो ट्रेनिंग आते हैं उनको भी बोलता हूँ, आप कुछ भी करते रहे, इतना घुस के कुछ भी मेहनत करके कुछ भी करें, अगर हम अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपने कुछ नहीं किया। वेरएज आपने कुछ नहीं किया, जो कि नहीं होता नॉर्मली, लेकिन कुछ नहीं किया, लेकिन आपने अपने आप को प्रेजेंट इतने अच्छे से किया, सामने वाले को लगता है पता नहीं क्या करके आया भाई। तो शायद इसका पहला वाला केस ना रखें, दूसरे वाला केस भी थोड़ा सा बिल्कुल ऑड सा है, तो बीच में रहें और एंड रिजल्ट्स जरूर आए। MOC आए ना आए मैटर नहीं करता, लेकिन एक क्वालिटेटिव रिपोर्ट आए तो कहीं ना कहीं RBI को या हमारे और भी बैंकर्स को ये जरूर नजर आना चाहिए कि स्टैट्यूटरी ऑडिट एक रिक्वायरमेंट है। क्यों बाहर के बैंक्स बर्स्ट हो रहे हैं, हमारे इंडियन बैंक बर्स्ट नहीं हो रहे, कहीं उनका हमारा इंडियन बैंक का भी नंबर ना आ जाए, तो इसलिए ऑडिट रिक्वायरमेंट है। अभी तो आज की डेट में मैनेजर को पता है कि कई सारी ऑडिट्स ब्रांचेस में होती है, तो थोड़ा सा कुछ फिर भी वो कंट्रोल करके रहता है। उनके अपने रीजनल ऑफिसेज और जोनल ऑफिसेज भी काफी टेक केयर कर रहे होते हैं। स्टिल हमें अपने आप को, अपने वर्कलोड को, अगर अपने वर्क को बचाना है तो क्वालिटी अपने आप में बोलेगी, कहेगी कि यस इट इज रिक्वायर्ड, इसको जाना नहीं चाहिए। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।